खेळाडूंचं, मान्यवरांचं, सर्व संघांचं आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आलेल्या सर्व पाठीराख्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आपण ठाण्याच्या ऐतिहासिक दादवी कोंडोळ स्टेडियममधून पाहतोय उपमुख्यमंत्री चषक 2025, ज्याला आपण ठाणे क्रिकेट किंवा क्रिकेट सर्कलमध्ये ठाणे प्रीमियर लीग 2025 म्हणून ओळखलं जाणारी ही स्पर्धा उपांत्य फेरीचा दिवस. उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सन्मान्य विकासजी रेपाळे साहेब यांच्या संकल्पातून साकारलेले हे क्रिकेटचं विश्व महाराष्ट्र माझा सेवा संस्था, त्याचबरोबर युनियन क्रिकेट अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे स्पर्धेचं आयोजन वर्ष 13व, पर्व 13व, एडिशन 13 सुरू आहे. पुन्हा एकदा सर्व दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. थोड्या वेळात सामना सुरू होईल. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत राहा ठाणे प्रीमियर लीग 2025. आणि वेळ आता डीजेला देऊया.
Crucial encounter this. The second semi-final of this edition, edition 13, already in the finale. Eknath Shinde Cricket Club 2 team has the top spot now, one of the top spot in this edition. Just at the eve of the start of the second semi-final. At a crucial encounter, knockout contest. Who will join Eknath Shinde Cricket Club 2 in the finale of this edition. Upamukhyamantri Chashak, famously known as Thane Premier League, edition 13. FTL won the toss, electing to bat first with the ball in his hand. Prathesh Mahale going right arm over the wicket. Good delivery this. Good decision by the batsman not to go for that single. Brilliant start this. Dot delivery. What an occasion. The second semi-final for the day in this edition. Eknath Shinde Cricket Club 2 team
Making it to the cut to the finals. Batting brilliantly, 236 on the board. Did brilliantly to defend it. Good delivery. This just angling in a little bit. A foolish quite that last delivery. Then the previous one. 2 dot deliveries to start. I'd like to request the extra player of Ambernath Rising Cricket Club to please join us on the commentary box end. Good delivery this. Quite foolish that one just outside the off stump. Just trying to help it on the offside. No connection with the bat. Hardik Tamore on strike. At the non-striker end, Sairaj Patil. Also being selected in the MPL. To have that confidence going in. Good delivery this. Is there an edge? There is an appeal. Quite ecstatic the bowler is. No signal from the umpire. Really good delivery that was. Just on a sort of good length area. Just leaving the batsman. Trying to poke it. Really good delivery. Nevertheless, a dot delivery. Very good decision by the umpire. 2 deliveries to go in the first over. Short of length delivery. Just putting his bat out. Down to the deep extra cover region. Away she goes for a couple of runs. Opens his account. Hardik Tamure with those couple of runs. Just a little bit on the shorter side. That previous delivery. Just hanged it bat out on the offside. Couple of runs. Good start this from the bowling side. Prathamesh Mahale. Nicely driven on the up, but straight to the fielder. Good feeling at the end of the first over. 2 without losing any wicket. Team FTL. Coming on to bowl the second over, Saksham Jha. Winning the toss, opting to bat first, overcast conditions. Little bit of breeze blowing around the ground. Not that much, but a little bit of breeze. Overcast conditions must help the seamers, I believe. Sairaj Patil on strike for the first time. Good delivery to start with. Good front foot forward. Nicely leaned onto that drive, but no connection with the bat. Just an out movement, I believe, after pitching. Good delivery to start his spell. Saksham Jha. Very good prospect. Sairaj Patil. Seasoned campaigner at the non-striker end. Hardik Tamore. Mumbai Ranji player. That's what this platform provides. All the senior most players as well. Good delivery, just angling in. The first one leaving out. The second one coming in. Takes the inner half out the bat. Goes down to the gap between short fine leg and deep square leg. Just a single.
Opens his account with that single, not that confident one. Sairaj Patil at the non-striker end. 3 without losing any wicket. Taking guard once again, Hardik Tamore. Good start. This has been from the defending champions. Short of length delivery. Was in control of that pull. Total control of that pull. Played down to the square leg region. Just a single. Good delivery once again. Rising after pitching. Good short of length delivery. Good steady start from the batting side. Three deliveries left in the second over. This time just a little bit outside the off stump. Pushed firmly down to the cover region. Dot delivery once again. Ambernath Rising Cricket Club, the defending champions of the previous year. The bowlers have started really well. 4 without losing any wicket, 1.4 overs. A good run up, somewhere between 20 to 25 yard run up. This is played nicely up above the cover region, going towards the boundary, the first boundary of the bat. Play nicely front foot forward, played above the vacant region, extra cover region for a boundary. Good delivery, just angling in, played nicely off the hips, down to the deep square leg region, just a flick of the wrist, just settles for a single, a wayward throw, but a good backup by the fielder. Just a single over there at the end of the second over, 9 runs on the board. Prathamesh Mahale to continue, the skipper of the side. Ambernath Rising Cricket Club. He has been brilliant to start up with the spell, the first over. And this edition, if any bowler who has 5 wicket all under his name, that is Prathamesh Mahale. Brilliant prospect, brilliant bowler, leading from the front for his side. On strike, Sairaj. This is played on the up, down to the long off region. 2 bounces over the ropes. Brilliant hit. Second boundary of this inning for Sairaj Patil. One first down to the long off region for a boundary. This time down to the long on region for a mammoth 6.
Good hitting this. Took some time, couple of deliveries to settle in. This time a little bit foolish delivery. Just angling in a little bit on the pads. Leg by being signaled by the umpire. With that one extra run, score moves on to 20 without losing any wicket. Slow start, but now making a immense of it. Hardik Tamore on strike. Sairaj Patil, 16 of just 8 deliveries. Brilliant start this. This time Hardik on the charge, but this is up in the air. Fielder is getting underneath it. Would have been a great catch. Held on to that. Not to be. A boundary to Hardik Tamore. On the charge, both the batsmen. Now a boundary to Hardik Tamore. Score moves on to 24. Just you can watch on the action replay. The fielder was stationed at deep extra cover region. The shot was on. The catch was on. Very good attempt by the fielder. Just inches away from him. Hardik on strike. Trying to dominate. 2 deliveries left in this over. This is hit on the up, down to the mid-off region. Away she goes for a boundary down to the long-off region. Back-to-back boundary for Hardik Tamore. 28 on the board. First 2 overs, really good overs. The third one, quite an expensive one. Short of line delivery just outside the off stump, helped it around down to the deep backward point region. Just a single this time. Ends over number 329 without losing any wicket. Good start this, quite an productive over this third over. What a brilliant platform this has been all the years. Start the next over from the opposition end. On strike. Looking in good touch. Little bit shorter side. This time just angling in a little bit on the leg stump. Nicely played down to the mid-on region for a quick single by Hardik Tamore. Coming back on strike, Sairaj Patil. This time, nicely played down to the deep extra cover region for a maximum. What a brilliant hit it was. Right out of the meat of the bat from Sairaj Patil. 6 down to the extra cover region.
This time down the ground, long enough. What a hit! 42 on the board in just 3. This time a little bit flatter. This time played nicely down to the cow corner region. Good fielding this. Just a single. Throw coming at the non-striker end. At the end of the second over, it was just 9 runs on the board. And now after 3.4 overs, it's 43. 34 runs have come off just 10 deliveries. Nicely bowled this time on the pads. Just trickle around. Down to the short mid-wicket region. A quick single there. Good sensible batting this from Hardik Tamore. Getting the back strike to Sairaj Patil. Last delivery of the 4th over. 44 on the board. Last delivery of the 4th over. Flatter one. This is up in the air. Going down to the long off region. And the third big hit. FTL just at the end of the 4th over. 3 huge sixes. Showing his class, showing his range of shots. Sairaj Patil. Coming on to bowl, Saksham Jha from the commentary box end. First over from the opposition end. Bowled well, now from the commentary box end. 1 over, none for 7. Hardik Tamore on strike. 14 of just 12 deliveries. Look good. Good partnership this. Nicely bowled there. Just angling in. Just played down the ground. Good fielding by the mid-off fielder. Dot delivery to start the 5th over. 4.1 over. 2 overs. It was just 9 runs. And after that 41 runs in 12 deliveries. Such has been this partnership, quite dominant. Sairaj Patil, 35 just 12 deliveries. Hardik Tamore, 14 of 13. This is just a good piece of bowling this. Just on a sort of good length area, not giving anything room outside the off stump. Hardik have been brilliant. Anything with the short stuff outside the off stump have been driving well, have been cutting well. This one just angling a little bit. Couple of dot deliveries to start the 5th over. Saksham Jha in action, going right arm over the wicket. This is up in the air, going down to the mid-on fielder just above his head. Lucky Do. It was good attempt by the fielder at the mid-on region. No ball being signaled by the umpire as well.
Free hit delivery coming up. That was a good delivery, but a no ball. And Sairaj Patil, right now the form he's in at, doesn't need any invitation, but a free hit delivery coming up. Short of length delivery. Lot of bounce on that delivery. We'll wait for the umpire signal. Wide is the call from the umpire. Free hit continues. Signal from the umpire to the bowler. One for the over. 35 of just 12 deliveries. Just couple of deliveries, 2-3 deliveries to just settle in. After that, rock the bowlers. 53 without losing any wicket. This was in the arc. It is out of the park. A mammoth 6 once again down to the long off region. Thank you, DJ. Sairaj on strike. Nicely bowled just outside the off stump. Hint of an away movement. Just places it gently down to the backward point region. Just for a single. Moves on to 42 of just 14 deliveries. And the fastest 100 as well in this edition of Thane Premier League is under the name of Sairaj Patil of just 34 deliveries. Been dominant in this whole event. Been dominant today as well. 42 of just 14. Now on strike, Hardik Tamore. This is up in the air. Luckily for him, no deep mid third man over there. Boundary of the outside edge. Thank you, DJ. Quite lucky Hardik was on that previous delivery, just trying to force it on the onside. Takes the outside edge, goes down to the vacant third man region for a boundary. 64 on the board. This time, full face of the bat. Plays down to the cow corner. One bounce over the ropes at the end of the 5th over. 68 without losing any wicket. Going all guns blazing. Team FTL. The end of the 5th over, 68 without losing any wicket. A solid foundation being laid by both the openers, Hardik Tamore and especially Sairaj Patil. Been really dominant. Already has a century under his name in this event of just 34 deliveries. The brilliant platform. This has been all those years, 13 years on the trot. This is the 13th edition. Upu Mukhyamantri Chashak, famously known as Thane Premier League, under the guidance of our honorary this time sprayed on the leg side, nicely played down to the deep mid-wicket region for a maximum.
Thank you, DJ. Thank you, DJ. Sairaj Patil moves on to 48 of 15. Prior to this, fastest half century of 17 deliveries. If the next delivery goes for a couple of runs or a boundary, it will be the fastest. Short of run delivery just outside the off stump. Wide ball being signaled by the umpire. A wayward delivery this time. Trying to add more pace on that previous delivery. 75 runs on the board. Ambernath Rising Cricket Club, the defending champions. Short of length delivery, this is pulled. Oh, that was a really good effort. But fastest half century for Sairaj Patil in this event of just 16 deliveries. Outstanding. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Short of length delivery, a tad slower than the previous one. Just fogged the batsman. Went straight to the wicket keeper. The fastest half century of this edition. Sairaj Patil. 6 sixes, 3 fours. 52 of just now, 17 deliveries. Brilliant he has been from the onset. 79 on the board. 3 deliveries to go in the power play over. Short of length delivery once again, a wayward delivery outside the off stump. Wide signal by the umpire, 80 on the board. Definitely what a platform we have been seeing. Tremendous platform for all the players. Many of them getting selected in MPL. Congratulations to them. Takes a couple of steps towards the bowler. Good delivery. That's just a slower one, I believe. Just a little bit variation on that previous delivery. Just a hint of an away movement. Dot delivery. 2 deliveries to go. In the 6th over. 80 on the board. Inside the 30-yard circle. Just wide on the off stump. 3rd wide of the over. 81 on the board. Just trying to unsettle the batsman. Sairaj Patil bowling away from the stumps. That's what this platform brings. We have said, rightly under guidance of our Honorary Deputy Chief Minister of Maharashtra, Honorary Eknath Shinde sir. Once again, a wide delivery and under the visionary of our own Honorary Mr. Vikas Repale sir. What a brilliant platform this has been. All the years, 13 years on a trot. 4th wide delivery of this over. Trying to bowl outside the off stump, trying to bowl away from the body of Sairaj Patil. Definitely, but they'll have to bowl within the wide lines. 82 on the board. Quite lot of time left in this over. 14 overs to go in this inning after this. Need to come back into this match. Need to get dot deliveries. Need to get wickets. Sairaj Patil on the charge still. This time, good delivery. Just hovering on the good length area. Just a gentle push. Nudge on the offside. For a quick single they go. 83 on the board.
Hardik back on strike. Last delivery of the 6th over. This has been a good over apart from that wide deliveries. 6 and a 4, but after that a good comeback. This time played with an angle bat. On the onside, dot delivery to end. Over number 6th, 83 on the board without losing any wicket. Power play restriction ends, so there will be the field. Definitely the field will spread, and at the end of the 6th over, 83 on the board. Thank you, DJ. Thank you, DJ. At the end of the 6th over, 83 without losing any wicket, and a change in the bowling lineup and a change in the commentary box and as well. Once again, back in the commentary box, and the voice of Thane, Pradeep Desai, sir, Bunty, sir, back in the commentary box. Over to you, sir. थैंक यू आनंद. पहली गेंद पर वही प्रहार, वही जवाब, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे. कमाल का अगर एक कैच होता, अगर लपक लिया जाता. थैंक यू डीजे. मैदान पर 2 दिन पहले तूफान आया था, लेकिन ये तूफान साइराज के नाम का आया है. क्या कमाल का ये स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटीज कमाल के प्लेयर के पास. इस बार भी बड़ा हिट करना चाहते थे स्लॉग हिट, लेकिन इस बार पैरों की हलचल नहीं हुई. विकेट कीपर ने काफी मुस्तैदी के साथ गिल्लियां उड़ा दी. अपील की अंपायर के पास. भाग्यश्री अपने क्रीज में ही थे. साइराज क्या कमाल का बल्लेबाज. तो अंपायर के पास इस निर्णय को भेजा गया है. डीजे थैंक यू. डीजे थैंक यू. डीजे अंपायर अपने निर्णय को बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन 79 रन अगर इसको रोड पे लगे हैं तो फिर एक ही कहना पड़ेगा जो तूफान कहते हैं. तूफान ये मैदान पे आ चुका है साइराज के रूप में. काफी बढ़िया बल्लेबाजी की. 16 गेंदों पे 50 रन, फास्टेस्ट 50 इनके नाम पर. 34 गेंदों में 100 सैकड़ा इनके नाम पर. रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं. राज है साई का, साई राज का राज. थर्ड एम्पायर का डिसीजन देखते क्या बता देता है. ए अरे आम्हाला थांबून दे मग वाजव ना. अरे म्हणजे ऐकून दे. FTL चालू आहे. टेनिसची मॅच आहे. का लावला आला का आगे वाजव ना गाणं. त्याच्याबद्दल बोलून दे ना जरा 2 वाक्य. बोला लवकर. या आईला नुसतं वाजवत बसते. काफी बड़ा स्तर का ये स्पर्धा है, टूर्नामेंट है, प्रतियोगिता है.
दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं और उनके बल्ले से ऐसे रन आना जिसके लिए दर्शक आते हैं और दर्शक देखते हैं मैच को। T20 फॉर्मेट में यही आतिशबाजी, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं है। कल के 2 दिन की बरसात में जितनी बरसात नहीं गिरी, इतने रनों की बरसात इस बल्लेबाज के बल्ले से गिरी है। देखिए, दिवाली में अलग फटाके आते हैं, क्रैकर्स आते हैं, लेकिन ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थे, ये सबसे बड़ी बात है। जरा एक विशेष सूचना है, गाड़ी नंबर 262665 प्लीज जना, एंड अंपायर डिसीजन बैटर इज आउट। तालियों की बौछार होगी। साईराज जिनके चेहरे की मुस्कान, डायनेमिक डैशिंग पर्सनालिटी, जो क्रिकेट के सबसे बड़े महारथी है, ऐसे हमारे सम्मानीय। लेकिन यहां पर देखते हैं, ये जो आज नवीन शर्मा जी की टीम FTL की उतरी है, फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक, और नाम ही फास्ट है, काम भी फास्ट करते हैं। नवीन शर्मा जी का जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद अगर इस ढंग से दी जाए तो कौन नहीं लेगा भाई। और सम्मानीय भूषण जी भोईर साहब, इनका आगमन हो चुका है, इनका हार्दिक स्वागत है थाना प्रीमियर लीग में। गाड़ी नंबर 2665 जिनकी भी गाड़ी लगी है, MH43 BN 2665, जिनकी गाड़ी है कृपया वहां से हटा दें, उससे अड़चनें पैदा हो रही हैं। प्लीज मूव फ्रॉम देयर। ट्रैफिक पुलिस की वार्निंग है, इसके लिए हम आपको इत्तला कर रहे हैं, प्लीज। इस बीच लेफ्ट हैंडर बैटर, राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, दाएं बाएं हाथ के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच, सफलता मिली। 89 for 1 नाउ। शॉट अपनी डिलीवरी थी, लेग साइड पर थी, इसके लिए हल्के हाथों से मोड़ दिया था, कलया का उपयोग किया था, लेकिन रन तो नहीं मिलेगा। डॉट के रूप में गेंद परिवर्तित भी होती हुई। प्रकाश यानी फ्लड लाइट्स में इस टूर्नामेंट को यहां पर देखना अपने आप में अलग अनुभूति है। ठाणे का ऐतिहासिक दाजू कुंजू स्टेडियम पर इस प्रतियोगिता का आयोजन, एडिशन 13 ठाणे प्रीमियर लीग 2025 का। इस बीच गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेफ्ट साइड पर टप्पा, लेग साइड के बाहर है, मोड़ दिया इसे डीप फाइन लीग क्षेत्र में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। खिलाड़ी ने काफी दौड़ लगाई, लेकिन रोकने में नाकामयाबी भी मिली। थैंक यू विजय। फिर एक बार स्पिन आक्रमण जारी रहता हुआ कॉमेंट्री बॉक्स एंड से। लेफ्ट आर्म इस बार अच्छी गेंद थी मिडिल ऑफ स्टंप पर, लेकिन कोन बनाकर थोड़ा बैकफुट पे जाकर क्रीज के गहराई का उपयोग कर कर बल्ले का मुंह खोला, खेल दिया। 1 रन के लिए शॉर्ट गली के रूप में, वहां पर के लिए खिलाड़ी नहीं है। छोर बदला, स्कोर बदला। पंचानवे रन 1 विकेट के नुकसान पर, 95 for 1। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन मैदान पे है, दाया बाया हाथ के खिलाड़ी। इस बार बैकफुट पे गए, खेल दिया डाउन द ग्राउंड। काफी मेहनत करनी पड़ी वहां पर, लेकिन गैप में गेंद 4 रनों के लिए।
ओवर के 50, स्कोर 99। 2 ओवर में क्या स्कोर था, उसके बाद क्या करोड़ बदली स्कोर ने। तूफान आया साईराज का, इसके बाद यतीन मडवी जो पहले मैच में कमाल की इनिंग खेल चुके हैं। ये स्ट्रोक में प्लेसमेंट कितनी बढ़िया थी, टाइमिंग के ऊपर भरोसा करते हैं, ज्यादा ताकत नहीं लगाते, ये इनकी खासियत है और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं ये भी। 99 फॉर 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7th ओवर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय यहां पर काफी उचित साबित होता हुआ। दोनों सलामी बल्लेबाज साईराज और हार्दिक, इन्होंने बढ़िया शुरुआत दी। पहले 2 ओवर के लिए वो रुके, अंदाज लिया उन्होंने पिच का, गेंद के बाउंस का, इसके बाद बाउंस बैक कर चुके हैं। 99 फॉर 1 आफ्टर 7th ओवर। 12 ओवर का खेल शेष है, दोनों तरफ से स्पिन आक्रमण जारी। गए साल की चैंपियन टीम है, लास्ट ईयर चैंपियन टीम अमरनाथ राइजिंग क्रिकेट क्लब, क्या वापसी करेगी? जरूर करेगी, क्योंकि इन्हों भी वो क्षमता है बाउंस बैक करने की। काफी दिग्गज खिलाड़ियों से ये भी टीम भरी है। यतीन मडवी सामना करेंगे 8वीं गेंद, ओवर की पहली गेंद का। पहली गेंद हल्के हाथों से इसको पुश किया था, लेकिन रन तो नहीं मिलेगा। वहां पर खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद है। पावर प्ले का बंधन उठ चुका है, फील्डिंग फैलाई गई है। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर फार एंड से। इस बार फिर एक बार गाइड किया गेंद को, लेकिन गली के क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ गेंद को रुकाने में कामयाब खिलाड़ी। 2 बिंदी गेंदे, डॉट गेंदे आई है इस ओवर में। अच्छी शुरुआत हुई 8वें ओवर की। तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए। इस बार बैकफुट में गए, कट किया कवर से स्वीपर कवर की दिशा में, चहलकदमी करते 1 रन पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं दोनों बल्लेबाजों को। छोर बदला, स्कोर बदला और 100 कंप्लीट, 100 रन पूरे इसके साथ ही। हंड्रेड अप, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। बैकफुट में गए और पंच किया स्ट्रोक को कवर से स्वीपर कॉर्नर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर, और ये रनआउट का मौका यहां पर अगर थ्रो प्रॉपर आता तो। जल्दबाजी दिखाई थी, रिस्क उठाई थी, सामने वाले खिलाड़ी का कॉल भी नहीं था, ये यहां से निकल गए थे अपने क्रीज से। नजदीक का मामला था, लेकिन ये जोखिम, ये रिस्क। क्रिकेट में हमेशा कहते हैं बॉल को मत देखो, सामने वाले के कॉल को देखो। थोड़ी हलचल, राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन है, दाएं बात के बल्लेबाज है, फील्डिंग में तब्दीली बार बार की जाती है। इस बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग से फिर से निकलते हुए फार एंड से। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया था मैदान क्षेत्र में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। सीट करते हुए गेंदबाज खुद गेंद पर पहुंचे, 1 रन। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए हार्दिक सामना करेंगे। इस बार पुल किया है, लेकिन खिलाड़ी है डीप में, डीप मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। ओवर नंबर 8 ओवर के बाद 102 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
वही खिलाड़ी सलामी के दौर में आया, उन्होंने अपने कदमों को जमाया वहां पर, बहुत बढ़िया साथ दिया है साईराज का। अब स्ट्राइक एंड पर हार्दिक, दोनों तरफ से स्पिन आक्रमण जारी होता हुआ। फ्लाइट डिलीवरी थी, बहुत बढ़िया गेंद, ये लाजवाब डिलीवरी, नाइस स्केल ऑफ डिलीवरी। इस बार फ्लाइट पे बीट किया, बल्लेबाज जो सेट है उनको अपसेट किया, पूरा ओपन ही कर दिया था। विकेट कीपर का बहुत बढ़िया काम विकेट के पीछे बिहाइंड द स्टंप, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में अपने घर में हार्दिक। अच्छा स्पिन आक्रमण है टीम अमरनाथ राइजिंग के पास। बैकफुट में गए, जगह बनाई, खेल दिया था स्वीपर के ओवर में। जैसे गेंद है, गेंद के मेरिट के अनुरूप खेलते नजर आ रहे हैं। अच्छे गेंद का सम्मान करो, खराब गेंद का समाचार लो, यही तो क्रिकेट का मूल मंत्र है। T20 में पार्टनरशिप की बहुत अहमियत है, और स्ट्राइक को बदलना, रोटेट करना, यह सबसे बड़ी बात है। दिल की टिक टिक और स्कोरबोर्ड की टिक टिक चलते रहनी चाहिए भाई। इस बीच गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर ऑन साइड पे आसानी के साथ इसको मोड़ दिया था, लेग साइड पे ही गेंद थी, लेग स्टंप पर, इसके लिए कोई कठिनाई भी नहीं हुई यतीन मनवी को। दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं, लेकिन गेंदबाज भी सटीक हो रही है। स्टंप टू स्टंप अटैक, वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन अपील की गई है, काफी तेज अपील है, लेकिन अंपायर टच से मैच नहीं है। बहुत बढ़िया गेंद, ओपन अप कर दिया था, टप्पा खाया, गेंद ने काटा बदला, घूमी, काफी अच्छा टर्न भी मिला। जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद, ऐसे कहना पड़ेगा। नाइस इन एयर, बहुत बढ़िया फ्लाइट भी थी, टप्पा खाने के बाद गेंद घूमी भी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस बार पैडल स्वीप, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन है, एक से ज्यादा कुछ रन का यहां पर कॉल है, लेकिन रॉन्ग एंड पर थ्रो है, लेकिन चलेगा, एक ही रन पे संतुष्ट। बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया हो रही है टीम अमरनाथ राइजिंग क्रिकेट क्लब के लिए। अभी तक कमाल का ओवर डाला ही है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया है इस ओवर में। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करो, आपको फल मिलेगा जरूर विकेट के रूप में। लाइन और लेन पर बरकरार होना चाहिए, आपके पास गति हो न हो, लेकिन अनुशासन और नियंत्रण सबसे बड़ी चीज है, जो इस ओवर में दिखाई भी दी। यतीन सामना करेंगे अगली गेंद का, जो स्ट्राइक एंड पर है। हल्के हाथों से मोड़ दिया, सिंगल अवेलेबल है, आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। ओवर की समाप्ति होगी यहां पर 9वें ओवर की। 9 ओवर के पश्चात स्कोर है स्कोरबोर्ड पर दर्शाता हुआ 106 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर के बाद देखते हैं मंजिल, आधी मंजिल तय होगी। आप देख रहे हैं और अनुभव ले रहे हैं ठाणे जिले की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ठाणे प्रीमियर लीग 2025 में टीम FTL सामना कर रही है लास्ट टाइम के विनर अमरनाथ राइजिंग क्रिकेट क्लब। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय उचित साबित किया था, साईराज के बल्ले ने तो आग उगली थी वहां पर।
10वें ओवर की शुरुआत फार एंड से। शॉट ऑफ लेन बैकफुट भी गए, कट किया गया इनको स्वीपर कवर क्षेत्र में, डिप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 107 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज पता चलेगा पहला कदम आगे बढ़ा है फाइनल में, वो है एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब 2 की टीम ने। पता चलेगा कल दुधिया रोशनी में फाइनल में कौन सी टीम उनके सामने खड़ी होगी। इस मुकाबले के बाद हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, लेकिन चलते हैं अगली गेंद के लिए। इस बार आउट अ शॉट, पिकअप शॉट, दैट इज अ ग्रेट कनेक्शन, टाइमिंग का ये सिक्सर। थैंक यू डीजे। हार्दिक का ये शॉट, हार्दिक बधाइयां जैसा ही था, क्या कमाल का कनेक्शन, संपर्क। फिर शॉट ऑफ लेन, जल्दी एक्शन में आए, बैकफुट पे गए, खेल दिया था मिडल ऑफ द बैट, टाइमिंग बहुत बढ़िया था लेकिन प्लेस नहीं कर पाया स्वीपर डीप बैकवर्ड पॉइंट की जगह पर। खिलाड़ी को इसके लिए रखा गया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और बल्लेबाजों के कदम एक दूसरे के छोर से बदलते नजर आए। यतीन मणवी का बल्ला अभी भी शान दिख रहा है। बड़े हिट के लिए वो भी जाने जाते हैं लेकिन अभी भी उनको इतना मौका भी नहीं मिला है। इस बीच अगेन और मिडल ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों से मोड़ दिया, 1 रन काफी तेजी के साथ मुकम्मल किया। खिलाड़ी काफी दूर से आ रहे हैं लेकिन 1 ही रन पे संतुष्ट। अच्छा कॉल दोनों में, आपसी तालमेल बहुत बढ़िया। देखते हैं कि ये इनिंग को आगे कैसे बढ़ाते, क्योंकि आधी मंजिल यहां पे तय होने वाली है। 10 ओवर का खेल, आखिरी ओवर 10वें ओवर की ये गेंद। रिवर्स खेलने गए, स्विच इट करने गए, कनेक्शन नहीं हुआ, प्रॉपर बॉडी पोजीशन में भी नहीं थे वो। लेकिन गेंदबाजी का भी तारीफ करनी पड़ेगी, गेंदबाज को, बल्लेबाज को फॉलो किया उन्होंने। इस बीच अगेन अच्छा संपर्क, ऑन ड्राइव, 1 ही रन मिलेगा। जो खनक सी आवाज आती है स्ट्रोक खेलने के बाद वो काफी मधुर है। चलिए यहां पर 10 ओवर का खेल समाप्त, ड्रिंक्स मैदान में 10 ओवर के बाद स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर 116 रन, 116 फॉर 1। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद क्या ये इनिंग कैसे आगे बढ़ेगी जरूर देखेंगे और सुनेंगे। अब 10 ओवर के बाद की ये कहानी, आनंद श्रेष्ठ इंग्लिश कमेंटेटर, इनकी जुबानी।
Nicely played off the back foot, sweeping across, played down to the cow corner for a boundary. Good start to the 11th over after a short break. 120 on the board. Hardik moves on to 43 of just 30 deliveries. This time off the back foot, once again driven down to the backward point region. Dot delivery. Advay, 1.2 overs, none for 25. Just outside the off stump, nicely cut it down to the deep backward point region. Could throw one bounce straight to the wicket keeper. 121 on the board. 3 deliveries to go in the 11th over. 9 overs left after this. Good partnership this as well. Hardik batting brilliantly. 44 of 32. Yatin Madhvi, 11 of 11 deliveries, just settling in. It has been a good event for him as well. Brilliant performances with the bat by him. Nicely bowled this, drawing the batsman forward. Beaten, all ends up. Digs the outside edge of the bat, goes down to the third man region for a boundary. हॅलो, आज आम्हाला आनंद वाटतो की आज या स्पर्धेच्या निमित्ताने उपस्थित दर्शवलेले सन्माननीय तरुण तडफदार कर्तव्यनिष्ठ नगरसेवक माननीय भूषणजी भोईर साहेब, स्वतः एक अप्रतिम दर्जाचे क्रिकेटपटू, माजोडा मानपाडा प्रभाग समितीचे सन्माननीय अध्यक्ष सन्माननीय भूषणजी भोईर साहेब यांचं या ठिकाणी आम्ही स्वागत आणि सत्कार सन्माननीय आयोजक विकासजी रेपाळे साहेब आणि मी रमता मॅडम यांना सुद्धा विनंती करेन, रमता भोसले मॅडम यांना, की आपण व्यासपीठावर यावं. स्वतः एक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहेत. भूषण भोईर साहेब यांचं हार्दिक स्वागत. आज या स्पर्धेनिमित्ताने त्यांनी भेट दिली. नक्की त्यांनी वाटत असेल मैदानात मी पण जावं, मी पण खेळावं. एक जबरदस्त प्रतिभाशाली अष्टपैलू खेळाडू आहेत. धन्यवाद साहेब, आज आपण या स्पर्धेला भेट दिली. आपण या सामन्याचा आनंद घ्यावा. सामना सुरू आहे, पण मान्यवरांचं आगमन आज आपल्या इथे दिग्गज. हो नक्कीच, या स्टेडियमच्या जडणघडणीमध्ये जितका विकास रेपाळे साहेब यांचा सिंहाचा वाटा आहे, भूषण भोईर साहेब यांचाही वाटा आहे. अशा अष्टपैलू खेळ खेळणारे खेळाडू यांच्यामुळेच हे आपल्या ठाण्याचा हक्काचं हे दाजू खेळणे आता इथे हस्तक खेळतं आणि आज ऐतिहासिक बनले. टाळ्या झाल्या पाहिजे दोघांसाठी. अशा अनेक नगरसेवक आहेत ज्यांनी यासाठी बरीच मेहनत घेतली, पाठपुरावा केलाय. त्यामुळे हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्टेडियम उभं आहे. आपण वळूया मॅचकडे. काय घडतंय काय बिघडतंय ते आपण बघूया. सामना चालू आहे FTL विरुद्ध गतवर्षीचा चॅम्पियन अमरनाथ रायझिंग क्रिकेट क्लब या संघाकडे. धावफलकी पाहूया आणि सामना आता आपण पुढे कसा वाटचाल करतोय ते बघूया. ओव्हर टू आनंद. At the end of the 11th over, 130 on the board for the loss of 1 wicket. Sairaj Patil back in the dugout. Mayur Divekar coming on to bowl. Could start this with the dot delivery. The first delivery of the 12th over. 130 on the board. What a strong dominant performance from the bat up till now from team FTL 11.
Good delivery. This just angling in a little bit, bowling around the wicket. Playing down to the deep square leg region for a single. Yatin moves on to 17. Hardik Tamore batting on 48. 48 of just 30 deliveries. 131 on the board. Just going right arm over the wicket. This time to the right-hander. Nicely clipped off the pads down to the long on region. Just a single. Just holding one end up. Hardik Tamore, a seasoned campaigner, quite experienced, taking it deep. 49 of 34. A good partnership along with Sairaj Patil, and now a good solid partnership developing with Yatin Madhvi as well. Low full toss delivery, just driven nicely down to the right side of the long off fielder. Just a single. Good fielding. Just kept it for a single. Those two batters. It's been a good over up till now from Mayur Divekar. Coming into the attack, just 3 singles of 4 deliveries. Coming back on strike, Hardik Tamore, 49. Nicely bowled, just clipped, just played off the wrist down to the cow corner region. Just a single. 50 up for Hardik Tamore. 50 of just 35 deliveries. Raises it bat, applauds the crowd and his dugout as well. Really good batting this, really good stuff from Hardik Tamore. 50 of just 35 deliveries. The man for a moment in this crucial encounter, second semi-final encounter for the day. Last delivery of the 12th over. Just angling in, played down to the fine leg region. Good fielding by the fielder. Just a single. At the end of the 12th over, 135 on the board for the loss of 1 wicket. Coming on to bowl, Bhavinderji. Prior to this, 2 overs, 1 for 19. The only success the bowlers had took the wicket of Sairaj Patil. Just inches away from his keys. This time nicely hit, a slog hit down to the deep square leg region for a maximum. Good slog slip. Deep square leg region for a mammoth 6 by Yatin Madhvi. The first 6 of his inning. 25 of 18. 141 on the board. 12.1 over. This time just swivel across. Good cut shot down to the deep backward point region. Good chase by the fielder. Station at the extra cover region. Couple of runs added to the scoreboard. 143 on the board. Brilliant this partnership has been.
Just holding on to the wickets and getting more and more runs for the last onslaught. 1-4-3 for 1. Still on strike. Yatin Madvi looking good. 27 of 19. This one a little bit tossed up delivery, a little bit foolish. Wild slog once again played down to the mid-wicket region for a single. There is some purchase out there for the spinner as well. But trying to bowl a little bit flatter, those spinners not giving any air at all. This time a little bit tossed up delivery once again. Just a gentle nudge on the offside. Away they go for a quick single. 2 deliveries to go in the 13th over. Looks a good score. 145. This time more flatter delivery. Just a gentle push to the cover region for a quick single once again. Not trying to play any anxious shots. Already have got a big hit of the first delivery of this over. This time going on the back foot. Nicely played down to the long on region for a single. Ends over number 13th. 147 on the board for the loss of 1 wicket. Welcome, we welcome honorary Mr. Nikhil Burjude, sir. The TPL Thane Premier League, this is the season 13th. One of our dignitaries just arrived. Mayur Divika to start up a new over from the opposition end. Nicely bowled this, just leaned into that drive down to the deep extra cover region. Just a single once again, 148 on the board. Back on strike, Yatin Madvi, 29 of 21 deliveries. Hardik Tamore, 53 of 38. What a platform this has been all those years, 13 years on a trot. The Up Mukhyamantri Chashak, famously known as Thane Premier League, season 13 this is. Quite foolish that delivery played straight back to the bowler. There is an appeal by the bowler, but just went on the bounce to the bowler. What a platform this has been all those years under our visionary, honorary Mr. Vikas Repale, sir. What a platform this has been. Full toss delivery just outside the off stump. Just slow in the air. Just played down to the long off region for a single. You have seen many more IPL players, Ranji players, and today we saw Tanush Kotian in the first match itself, was in the playing squad, Indian Test match team. That was this platform brings in, rubbing shoulders. The junior players this time clipped nicely down to the mid-wicket region. Excellent effort from the fielder, but just inches away from him. Goes down to a boundary once again. Thank you, DJ.
150 up, 153 for 1 in 13.4 overs. Strong foundation being laid by the openers. They're just making immense of it. This time nicely driven down the ground. Down to the long on region. Just a single this time. 154 on the board. Just change of bats for Yatin Madhvi. Looked reasonably good in this inning. Just took some time to settle in. And after that, couple of boundaries and a huge hit down to the deep square leg region. 30 of 23. Last delivery of the second over of his spell for Mayur Divekar. Flying to play on the onside. Very good delivery. Just outside the off stump. A hint of an away movement. Just clipped the lower part of the bat. Luckily ricocheted onto the pads. Dot delivery to end the 14th over. 154 on the board for the loss of 1 wicket. Second semi-final of this edition. What a grand platform this has been for all the players, rubbing their shoulders with Ranji players as well as the IPL players as well. Great platform under our visionary Honorary Mr. Vikas Repale sir, under the guidance of Deputy Chief Minister of Maharashtra, Honorary Mr. Eknath Shinde sir. Living up to this expectation, all those 13 years, this is the 13th edition. Nicely clipped once again, just off the toes, down to the square leg region. Moves on to 59, Hardik Tamure of just 41 deliveries. Yatin Madhvi, 30 of 24, 155 on the board. Winning the toss, electing to bat at a very good position for the final onslaught. Ambernath Rising Cricket Club. Bowling right now. Not right on the meat of the bat. Just a single good chase by the bowler himself. Just a single down to the short mid-wicket region. Ambernath Rising Cricket Club, the defending champions of the previous year. And they do have a very good batting lineup. Definitely FTL team knows that. At least they would like somewhere between 220, 230 to be on the board. This time nicely bowled, just leaving the batsman after pitching. Just take the outside edge of the bat. Luckily for the batsman, away from the backward point fielder. Just a single. There's been a couple of good overs. 157 for 1. 14.3 overs, just 5.3 overs more to go. Prathamesh Mahale, the skipper for the fielding side. Done really well in this over, just 3 singles. This time up goes and out of the park. Brilliant hit from Yatin Madhvi. That was a really, really good hit on one knee. Next delivery.
This time, really good comeback delivery from the bowler. Just angling in, right on the money. Just a single. Nicely dug in by Yatin Madhvi on the offside. 164 on the board. Last delivery to go in the 15th over. 5 overs left after this. Do or die encounter. Second semi-final. Nicely bowled this time. Played with an angle bat. Good fielding by the short third man fielder. Gave every bit of his body behind that ball. Just a single to end the 15th over. 165 on the board for the loss of 1 wicket. Change in the bowling lineup. Change in the commentary box as well. Once again, like to invite the voice of Thane, Bunty sir, back in the commentary box end. Over to you. वळूया आपण मॅचकडे. आलेल्या सर्व क्रीडारसिकांचं पुन्हा एकदा आपण स्वागत करूया. आपण पाहता ठाण्याच्या ऐतिहासिक दादोजी कोंडे स्टेडियममधून ठाणे जिल्ह्याच्या क्रिकेटला संजीवनी देणारी स्पर्धा उपमुख्यमंत्री चषक 2025 म्हणजेच ठाणे प्रीमियर लीग 2025चा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना. धावफलक दर्शवतोय 15 षटकांमध्ये 165 धावा, 1 गडी बाद. नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय टीम FTL ला नक्कीच चांगला निर्णय म्हणावा लागेल. आणि फॉरेनकडनं गोलंदाजीत बदल. फॉरेनकडनं मध्यम गती तेज आक्रमण. यावेळी खोलवर टप्पा होता. मनगडच्या जोरावर चेंडूला वळवलं. शॉर्ट फाईन लेगला सर्कलमध्ये खेळाडू तिथे आहे तैनात. एकच धाव मिळेल. स्ट्राईक बदलेल. आपण पाहताय हार्दिक आणि यतीन ची जोडी. चांगली पार्टनरशिप. पहिल्या विकेटसाठी नंतर दुसऱ्या विकेटसाठी आपण भागीदारी बघतोय. दरम्यान गोलंदाज राऊंड द विकेट. हवेत उडवला चेंडूला. उंची जास्त, रुंदी कमी. क्षेत्ररक्षक घेतोय झेल. हो, हा झेल सुटला. सर्वांनी हात उंच केलेले होते. त्यानंतर ते हळूहळू कपाळावर आले. झेल सुटला. अशा क्षणी झेल पकडला पाहिजे. कारण की तुम्हाला धावांची गती कमी करायची आहे. तुम्ही विकेट घेतला तरच धावांची गती कमी होणार आहे. फलंदाजांना माहिती आहे. त्यांनी आता एक्सेटरवर पाय दिलाय धावगतीच्या. हार्दिक सेट आहे. यतीन वडवी आक्रमक वृत्ती त्याची नेहमीची तीच दाखवतोय आता आपल्या फलंदाजीमधून. दरम्यान राईट आर्म ओव्हर. गोलंदाज यावेळी पुन्हा एकदा पाहिलं चेंडूमध्ये गती परिवर्तन. चेंज ऑफ पेस. दुसरी धाव वेगात घ्यावी लागेल. पण थ्रो, गुड थ्रो नक्कीच राईट हँडला होता. पिकअप अँड थ्रो इन वन ॲक्शन. थ्रो परफेक्ट ॲट द बॉलिंग एंड. परंतु तो ठीक पिक करता अडवता आला नाही. होल्ड करता आला नाही. त्यामुळे पण ही रिक्स होती. ती पत्करली आहे. कौतुक हार्दिकचं केलं पाहिजे. पहिल्यापासून तो मैदानावर तंबू ठोकून उभा आहे. हार्दिक उच्च कोटीच्या श्रेणीमधल्या खेळाडूंमध्ये त्याची गणना होते आणि त्यांनी ते सिद्ध केलंय. दरम्यान मयूर दिवेकर फॉरहँडकडनं यावेळी पिकअप शॉट खेळायचा प्रयत्न. थोडा शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू बघितला. लगेच ऍक्शन मध्ये आले पण ठीक बॅटवर येत नाहीये. बॉटम हँडचा इस्तेमाल केला जातोय. डीप स्क्वेअर लेगला ऑन साइडला क्रॉस बॅटर स्ट्रोक. एक धाव नक्कीच मिळते. स्ट्राईक रोटेट होतोय. यतीन वडवी स्ट्राईकला आपण पाहतोय. अहो यांचं हार्दिक स्वागत. आताच नितेश पाटोळे यांचं आगमन. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. हा फुल टॉस परंतु कन्वर्ट करू शकले नाही. डीप लॉंगॉनला चेंडू येतो. एकच धाव मिळेल. एकेर धावेने आता धावफलक खालचा ठेवला जातो. 171 धावा, 1 गडी बाद. शेवटचा चेंडू शिल्लक 16 षटकातील मार्गस्थ होतोय. गोलंदाज आपल्या मार्कवर. हार्दिक समोर आहे. समोर जातोय. 171 फॉर 1. लास्ट बॉल ऑफ द 16th ओव्हर. यावेळी ओव्हर शॉट पाहिला. थोडा पुढ्यात दिला चेंडू. फुलर लेन
जागेवरनं चेंडूला ऑन द अप ऑन द राईट क्रॉस बॅटेड शॉट डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं षटकार. थँक्यू डीजे. डीजे थँक्यू डीजे. हार्दिक 71 धावांची नाबाद खेळी साकारतोय 47 चेंडूंमध्ये. तर यतीन वडवी हा 29 चेंडूंमध्ये 40 धावांची एक अप्रतिम नाबाद इनिंग इथे पुढे नेतोय. 16 षटकापूर्ण 177 धावा एक गडीबाद. आपण पाहतोय धावफलकावर 17 धावांची कहाणी काय झाली आहे ते धावफलक दर्शवतोय धावफलकावर, असं म्हटलं तरी वावगं नाही. दोन्ही फलंदाजांनी संयम पण दाखवला, आक्रमणी दाखवलं. एक डावी उजवी जोडी म्हणजे कर्णधाराची डोकेदुखी, वारंवार क्षेत्ररक्षणात बदल करणं, गोलंदाजाला पण डोकेदुखी, कारण टप्पा आणि दिशामध्ये बदल करावा लागतो. ठाणे जिल्ह्याचं क्रिकेट आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या क्रिकेटला संजीवनी देणारी स्पर्धा म्हणजे ठाणे प्रीमियर लीग 2025. 17वा षटक मार्गस्थ. गोलंदाज सक्षमचा हा चेंडू, हो, चांगला चेंडू, खोलवर टप्पा, ब्लॉक होल मध्ये टाकायचा प्रयत्न, परफेक्ट डिलिव्हरी करतोय. फलंदाज जागेवर ठिय्या आंदोलन करायला लावतोय. निर्धाव चेंडू. सक्षम झा आपल्या वेगावर आणि आपल्या क्षमतेवर नियंत्रण ठेवणारा गोलंदाज म्हणजे सक्षम झा. याचं वैशिष्ट्य आहे की हा आपल्या क्षमतेनुसार गोलंदाजी करतो. प्रथमेश महाले या संघाचा कर्णधार, पण यावेळी फलंदाजांनी टिचून फलंदाजी केली. यतीन सामोर जातोय. यावेळी खोलवर टप्पा होता, बरोबर जमीन लगत डाऊन द ग्राउंड चेंडूला खेळले. स्वीपर कव्हरला एक पहिली धाव वेगात पूर्ण केली, त्यामुळे दुसरी धाव ही घेण्यामध्ये काही कठीणाई नाही आहे दोन्ही फलंदाजांना. पंचांचा इशारा येतो नो चेंडू, म्हणजे 2+1 3 धावा जोडल्या जातील. धावफलकामध्ये धाव फलक दर्शवतोय 180 धावा आणि 17वा षटक प्रगतीपथावर आहे. आणि आता उघडा डोळे पहा नीट, या पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट. फलंदाज लायसन मिळतं, ब्लँक चेक मिळतो फलंदाजाला. यावेळी पूल केलाय, परंतु बॅटवर काय ठीक बॉल्स येत नाही. उसळी घेणारा चेंडू होता, एक धाव मिळेल. फ्री हिटचा इतका फायदा करता आला नाही यतीनला. दोन्ही फलंदाजांनी जी भागीदारी केली आहे, पार्टनरशिप, ही फार महत्वाची आहे. पार्टनरशिप जेव्हा एखादी बनते त्यावेळी आपल्याला मजबूत स्कोर नेण्यामध्ये, आधार देण्यामध्ये ती फायद्याची ठरते. बरोबर है. छोटी छोटी पार्टनरशिप होती है, चाहे जिंदगी की हो या क्रिकेट की हो, ये पार्टनरशिप हमेशा फायदे की होती है. और बल्लेबाजों के बीच जो तालमेल है ये देखने लायक है. सामना करेंगे हार्दिक. सक्षम जा के अगली गेंद का सक्षम जा राइट आर्म और विकेट आते नजर आ रहे हैं. स्लो वन डिलीवरी ऑप्शन के बाहर, ज्यादा बाहर. अंपायर की दोनों बाहें फैलाकर इशारा आता हुआ कमेंट्री बॉक्स की तरफ. जी हाँ, ये वाइड गेंद है, इसको वापस डालना होगा. अतिक्रमणों में 1 रन का शुमार होता हुआ टीम FTL फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक, नवीन शर्मा जी की टीम है ये. आज इनका जन्मदिन है, उनको काफी बधाइयां हो, मुबारकबाद हम देते हैं. खुशबू फैलाई ऐसी कि गुलाब हो, लेकिन आपकी चेहरे भी खुशबू ऐसी, हंसी ऐसी है कि हर जहां और मुस्कुराता हुआ नजर आता है. चलिए मैच की ओर. फुलर लेंथ, लेकिन ये सीधी निकली है. वेल बोल्ड, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर. बहुत बेहतरीन डिलीवरी है. बल्लेबाज ने गेंद को देख का पर का आखिरी क्षण में कोई खेलने का इरादा नहीं जताया. सक्षम जा अपने गेंदबाज में परिवर्तन लाते हुए स्कोर काफी तरीके से आगे बढ़ा. 182 रन, जबकि 17 ओवर प्रगति पथ पर है. 3 गेंदें हो चुकी हैं. चौथी गेंद लेकर सक्षम जा कॉमेडी बॉक्स के सामने से
अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए। देखिए काफी दूर दराज में स्वीपर एरिया में खिलाड़ी खड़ा है सीमा रेखा पर, मानव सैनिक खड़े सीमा रेखा पर सक्षम अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा, बल्लेबाज से दूर रखा, परे रखा, उनके रीच से परे रखा, डॉट डिलीवरी। ये और अच्छा गुजरा है, बड़े स्ट्रोक तो नजर नहीं आए लेकिन लाइन और लेन पर सटीक नजर आए। सक्षम जा ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों का रखा है, यॉर्कर लेंथ गेंद करने की कोशिश की गई है, डेप्थ में बल्लेबाजी के डेप्थ में गेंद की करने की कोशिश सक्षम जा की। इस विषय गेंद पटकी हुई गेंद थी, बहुत अच्छा बाउंस, कंधों का अच्छा उपयोग, गेंद पटकी हुई थी इसके लिए उछाल मिली लेकिन कमाल की डिलीवरी है। दो यॉर्कर के बाद फिर एक बार दिखाई दिया उन्होंने बाउंसर। 182 पर स्कोरबोर्ड वही रुका हुआ थमा हुआ, आखिरी गेंद इस ओवर की 182 फॉर 1। बहुत बेहतरीन ओवर सक्षम जाका अब तक का ये टीम अमरनाथ राइजिंग क्रिकेट क्लब के लिए। इस बीच ये गेंद हवा में उड़ाया, गेंद को खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे, कैच कंप्लीट करेंगे और यहां पर दूसरा विकेट का पतन। हार्दिक तामोरे बैक टू डग आउट। 71 रनों पे 51 गेंदों पे 71 रन की लाजवाब इनिंग यहां पर समाप्त होते हुए हार्दिक तामोरे की, और सक्षम जा को आखिर में यह सफलता मिली। अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने का फल मिला। विकेट नंबर 2 डाउन। हार्दिक तामोरे की इनिंग यहां पर समाप्त हुई है लेकिन थैंक यू डीजे। शोएब शेख मैदान में दाखिल होते हुए, दिग्गज श्रेणी के क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम लिया जाए तो इनका भी नाम शुमार होता है उसमें। शोएब शेख, स्कोर देखते हैं स्कोरबोर्ड पर 182 फॉर 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 17th ओवर। 17 ओवर के बाद 182 पे 2-3 ओवर का खेल शेष है। क्या टारगेट रखेगी टीम एफटीएल अमरनाथ राइजिंग क्रिकेट क्लब के सामने, यह आने वाले 3 ओवर बताएंगे क्योंकि यहां से कम 200 के पार लक्ष्य देने की कोशिश जरूर करेंगे। विकेट इन हैंड है। 17 और 182 रन, 2 विकेट, अब तक की कहानी इस मैच की। स्कोरबोर्ड की जुबानी आप देख सकते हैं। फार एंड से मध्यम गति तेज आक्रमण, मयूर दिवेकर अपने मार्गक्रम को आक्रमण को जारी रखते हुए बॉलिंग कंटिन्यू। यतीन वर्वी पहली गेंद पर गेंद को घुटना टेक के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेज दिया है दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। इस बार हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, सिंगल ऑन है, पुश करो कुछ और ये ओवर तो कारण यहां पर बैकअप नहीं था।
इसके लिए रन लेने में कोई और 50। हाफ सेंचुरी कंप्लीट यतीन मडवी 34 गेंदों में 50 रन और उनका सेलिब्रेशन देखिए। यतीन मडवी अपने आप पे आत्मविश्वास विश्वास रखने वाली है इनिंग। कमाल की इनिंग, कमाल का प्लेयर। ये अच्छा स्ट्रोक है, कारपेट के साथ खेल दिया, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सुपर कवर में गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो करते और ये बैकअप है। यहां पर स्कोर देखते हैं, स्कोरबोर्ड पर दर्शाता हुआ 191, जबकि ये 18वां ओवर जारी है। यतीन मडवी ने अपनी हाफ सेंचुरी अभी कंप्लीट की है, अर्धशतक। पहले मैच से ये लगातार अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं रनों के हिसाब से। शोएब शेख सामना करेंगे। इस टीम की मजबूत कड़ी के रूप में जाने जाते हैं शोएब। ऑन ड्राइव, एक रन जरूर मिलेगा। बेडोर लेग स्टंप पर गेंद थी, इसको मोड़ दिया था। सिंगल आराम के साथ मुकम्मल किया शोएब ने, अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को आगे ले गए। 192 192 रन, 2 विकेट पर। यतीन मडवी अब एग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे कि नहीं देखना पड़ेगा। गेंदबाज फार हैंड से इस बार लेग साइड पर गेंद थे, मोड़ दिया था। शॉट लेग पर, यहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 193 रन, 2 विकेट पर। आखिर के 4-5 ओवर अच्छे गए, भले कि 1-2 बड़े हिट आए हैं, लेकिन रनों का जो बहाव था उसमें थोड़ी रोक तो जरूर लगाई है गेंदबाजों ने, खास करके मध्यम गति से जाकर रमन करने वाले सक्षम कहे या मयूर दिवेकर कहे। ये स्लो फुल टॉस और ये स्लो रन को जल्दी माप लिया, भाप लिया और ये कैच भी छूटा। यहां पर एक ही रन मिलेगा, ओवर की समाप्ति होगी। मौका बनाया था, चांस क्रिएट किया था, लेकिन हाफ चांस को भी आपको फुल चांस में कन्वर्ट करना होगा अगर रनों का बहाव को रोकना है। 18 ओवर के बाद 194 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी 2 ओवर क्या कहानी बयां करते हैं, आइए सुनते हैं इंग्लिश कमेंटेटर हमारे सहयोगी कमेंटेटर आनंद शेष की जुबानी। ओवर टू आनंद। Thank you, Bindi sir. At the end of the 18th over, 194 on the board. Going at a good rate, but a little bit on a slower side than the previous one. First 12 overs, they were cruising around nicely. 194 current run rate, 10.78. Still the projected score, 215. But I believe they must be eyeing somewhere between 225 to 30 runs. Prathamesh Mahale in action. Shoaib Sheikh playing down the ground, down to the long off region. Good fielding though, just a single. Throw at the non-striker end. One bounce straight to the bowler. Yatin Madvi, 53 of 36. What a brilliant exhibition of batting we have seen from him. First from Sairaj Patil, a half century, then from Hardik Tamore, a half century, and the third half centurion of this inning, Yatin Madvi. This is nicely bowled, quite foolish, just outside the off stump.
Quite pacey throw on a bounce to the bowler. Not happy with that fielder. Not that far away down to the cover region. One bounce throw to the bowler. 196 on the board. 10 deliveries left. Shoaib Sheikh on the strike. Good bowling this. Quite foolish. Once again played down the ground, down to the long off region. 3 singles only on offer in this over. Has really pulled this back. Ambernath Rising Cricket Club has done really well. Talking about the last 4 or 5 overs. This is the penultimate over of this inning. Yatin Madbi once again on strike. Just a little bit on the shorter side, didn't rise at all. A little bit uncomfortable for the batsman to play that shot on the onside. Single nevertheless. 4 singles just of this over, penultimate over. Hasn't given anything away outside the off stump to work on to the batsman. This time down the leg side. Pacey delivery, but a wayward delivery down the leg stump. With that 1 extra run, score moves on to 199 on the board. Last 8 deliveries in this inning. Shoaib Sheikh, the IPL fame, on strike. This time way down the offside. Back to back wide deliveries. One outside the leg stump. One quite far away from the off stump. 200 up. 200 for 2. 18.4 overs done. 8 deliveries to go. Still on strike. Shoaib. Short of length delivery. This is played nicely uppishly down to the mid-wicket region. A good catch. Rolling. Went till the ropes. We'll just wait for the umpire's signal. Definitely it will be reviewed. It was a good tumbling effort from the fielder at the mid-wicket region. Just look like though a tumbling effort must have just hit the ropes with his foot. But we'll just check with the third umpire. Thank you, DJ. Yes, it's a 6. That was a really good effort from the fielder. But fell down on the ground, went rolling. Couple of rolls and just touched the boundary ropes. Was a good effort. 206 on the board. A low full toss, played down to the cover region, got his body behind the ball, good fielding that. Single to end over number 19, 207 for the loss of 2 wickets.
Thank you, DJ. Saksham Jha to continue from the opposition end. Last over of his spell and last over of the inning. 207 for 2. On strike, Shoaib Sheikh. Full toss delivery to start with. No ball being signaled by the umpire. Thank you, DJ. Quite a pacey delivery, but quite a wayward delivery. Free hit coming up. Was a beamer angling into the batsman, burst above the waist high. 212 on the board. Free hit delivery coming up. Saksham Jha has done really well up till now, but a wayward delivery on the last over, first ball. Need to resurrect his line and length pretty quickly. Need to recollect his thoughts. Good delivery this time, just outside the off stump. Inner edge flows down to the third man region. Good fielding by the fielder at the third man region. A wideish throw. Nicely backed up by the bowler himself. 213 on the board. Just 5 deliveries remain. Just inching towards the total they had thought. I believe 220 to 225. 213 right now on the board. Yatin Madhvi back on strike. 53, 55 of just 38 deliveries. Saksham this time continuing right arm round the wicket to the left-hander. Short of length delivery. Good delivery this. Playing down to the cover region and a wicket. A third wicket down. Will have to move back in the dugout. Yatin Madhvi after playing a fine hand of 55 runs. Thank you, DJ. Back in the dugout, Yatin Madhvi after playing a fine hand of 55 of just 39 deliveries. Third wicket down for FTL 11, 213 on the board. Request the umpires to please hurry up. 4 deliveries left. Taking quite a long time to finish up this inning. Ajay Patil, the new batsman on strike. Going right arm over the wicket. Saksham Jha. 4 deliveries to go in the final over. Good slog hit. Oh, should have been taken. It was a very, very good attempt. What a hit it was from the meat of the bat. You can watch it at the action replay. In a fraction of seconds, went down to the cover region. Really good attempt. Couple of runs added to the total 215. 3 deliveries to go. Ajay Patil still on strike. Short of length delivery, rose a little bit. Couldn't connect it. Throw is coming at the non-striker end. Direct hit by the bowler. 4th wicket down. Back in the dugout, Shoaib Sheikh.
New batter coming in, Arun Yadav at the non-striker end. Arun Yadav played a good hand in the previous match in the quarterfinals. 215 on the board. This time played nicely, wide, just wide of the long off region for a maximum. Brilliant hit from Jay Patil. Thank you, DJ. 221 for 4. 2-2-1. Last delivery to go in this inning. Ajay Patil on strike. Short of length delivery. Played nicely. This is up in the air. Going down to the deep square leg region. And nicely held. That's a very good, well-judged catch. Fifth wicket down at the last ball of the inning. 221 on the board. 222 to win when we come back for the chase. Thank you, DJ. उपांत्य फेरीच्या उपमुख्यमंत्री चषक ठाणे प्रीमियर लीग 2025च्या या सोहळ्यामध्ये आज मान्यवरांची उपस्थिती झालेली आहे. मी विनंती करेन युवा उद्योजक सन्माननीय आशुतोष मस्के साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हाला प्रार्थनीय आहे. या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय विकासजी रेपाळे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आणि चिराग यांच्या शुभ हस्ते मान्यवरांचा सन्मान आणि सत्कार या ठिकाणी होत आहे. त्याचबरोबर सन्माननीय शाखा प्रमुख टेंबी नाका आरोग्यदूत म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते सन्माननीय निखिलजी बुजुडे यांचा सत्कार या ठिकाणी होताना आपण पाहत आहोत. त्याचबरोबर तरुण तडफदार शाखा प्रमुख सन्माननीय नितेश पाटोळे ज्यांना आऊ म्हणून आम्ही सर्व ओळखतो त्यांचं इथे हार्दिक स्वागत आणि सत्कार चिराग यांच्या शुभ हस्ते होताना आपण पाहत आहात. महाराष्ट्र माझा सेवा संस्था युनियन क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने आयोजित उपमुख्यमंत्री चषक 2025 मध्ये मनोज बैरे सर वॉर्ड क्रिकेट कमिटीचे सन्मान्य मनोज बैरे सर यांचं स्वागत आणि सत्कार या ठिकाणी ठाणे प्रीमियर लीग 2025च्या या उपांत फेरीच्या सोहळ्यामध्ये शशिकांत कदम आणि चिरागजी यांच्या शुभ हस्ते होताना आपण पाहत आहात. सर्व मान्यवरांचे त्याचबरोबर अभयजी वासकर उपविभाग प्रमुख यांचा स्वागत आणि सत्कार या ठिकाणी होताना आपण पाहत आहात. धन्यवाद. मान्यवरांचं स्वागत आणि सत्कार ही परंपरा जोपासली जाते. सन्माननीय आयोजक विकासजी रेपाळे साहेब यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला हा क्रिकेटचा रणसंग्राम प्रकाश होतात. हे क्रिकेट सामने अनुभवणं पाहणं त्याचा आनंद घेणं ही न्यारी ही पर्वणीच वेगळी आहे. आपण पाहत होतात दोन दिग्गज संघांमधला हा रणसंग्राम ठाणे प्रीमियर लीग 2025चा उपांत्य फेरीचा दुसरा सामना. मान्यवरांचं आगमन मान्यवरांचं स्वागत. क्रीडा रसिकांनी ज्या स्पर्धेला खूप मोठ्या प्रमाणात पाहिलंय निहाळलंय ती स्पर्धा ठाणे क्रिकेटला संजीवनी देणारी ठाणे प्रीमियर लीग 2025. थोड्या वेळात सेकंड इनिंग चालू होईल. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. फार मोठं आव्हान आहे. द बिग टार्गेट इन फ्रंट ऑफ लास्ट इयर चॅम्पियन अंबरनाथ रायझिंग क्रिकेट क्लब. बघूया ते पार करतात का डिफेंड करतो FTL टीम. ही धावसंख्या पाहणं महत्वाचं. पहिली इनिंग आपण पाहिली. दुसरी इनिंग आता आपण पाहूया. पाहत राहा कुठे जाऊ नका. आपण पाहत राहा ठाणे प्रीमियर लीग 2025.
target of 222 runs. Let's see how last year champion Ambernath Rising Cricket Club moves from there. 22 ओवर में 20 ओवर में अब 222 रनों का लक्ष्य है. लास्ट ईयर की जो चैंपियन टीम है जिनके ऊपर सर पे ताज बरकरार है ठाणे प्रीमियर लीग एडिशन 12 का, क्या ये बरकरार रख पाएगी? बड़ा लक्ष्य है. प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट यू टू ऑल द अदर्स जो ग्राउंड पे दिख रहे हैं, कृपया मैदान से बाहर आए. थैंक यू. मैच थोड़ी देर में चालू होगा. टीम एफटीएल काफी लंबा लक्ष्य रखा है इन्होंने. आतिशी बारी देखने मिली साईराज पाटिल की. उसके बाद हार्दिक तांबोरे का एक बहुत थैंक यू. हार्दिक तांबोरे की बहुत बढ़िया इनिंग 71 रनों की. इसके बाद यतीन मडवी का वो अर्धशतक. ये मजबूती प्रदान करता हुआ टीम एफटीएल को इस रन संख्या के बनाने में. देखते हैं मैच की शुरुआत होने जा रही है. टीम हडल करती हुई टीम एफटीएल की 222 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया है. टारगेट 222 का. दुधिया रोशनी में फ्लड लाइट्स में ये सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी, आरंभ होगा. दोनों दिग्गज टीम है और इनके बीच में जद्दोजहद 222 टू विन. The first delivery batting team. It's a humble request to the captain of batting team. Please send your extra person in our commentary box before deliver the first ball. Both the team. चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है. आप सभी का हार्दिक स्वागत है ठाणे का ऐतिहासिक दादरी कोंडी स्टेडियम से. मैं बंटी देसाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. ठाणे प्रीमियर लीग काफी बड़ी प्रतियोगिता. ठाणे प्रीमियर लीग 2025 ये 13वां साल है, 13 एडिशन है इस टूर्नामेंट का. और अंपायर का इशारा आता हुआ इम्पैक्ट प्लेयर डीजे. एक मिनट. इम्पैक्ट कोणाला केला? आकाश इम्पैक्ट प्लेयर है और प्रेमचंद इनकी जगह पर आकाश को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अब शामिल किया गया है. अंपायर का इशारा आता हुआ फार एंड से ओवर की शुरुआत होती हुई 222 रनों का लक्ष्य. हियर वी गो. द फर्स्ट डिलीवरी इज ऑन. पहली गेंद पर सिंगल के साथ खाता खुला. श्री गणेशा हुआ स्कोर का अकाउंट ओपन हुआ है विद दिस सिंगल. आकाश शर्मा इंपैक्ट है. आकाश शर्मा लगता है लेफ्ट हैंडर बैटर. इट्स humble request again to the captain of the batting unit. Send your extra person immediately in our commentary box. Thank you. लगता है अनिल रोनंकी है जिन्होंने अगर सुपर कैचेस में अगर गिना जाए तो इसके ऑर्डिन लिए हुए 2 कैच
अभी भी हमारे जहन में है। लेफ्ट हैंडर बैटर ऋषिकेश जादव की गेंद, फोर्सिंग ड्राइव है, बैक टू द बॉलर, खिलाड़ी गेंद के पीछे है, नहीं रोक पाएंगे, टाइमिंग बहुत बढ़िया मिला था और ये गेंद 4 रन के लिए से हमारे कपार। पटकी हुई गेंद थी, उठती हुई गेंद थी, गेंद के पीछे गए, मिडल किया लेकिन टाइमिंग के साथ खेला था स्ट्रोक को, फोर्सिंग ड्राइव था, बैक टू द बॉलर, कोई चांस नहीं। मिडान और मिडॉफ के खिलाड़ी ने दौड़ लगाई लेकिन आखिर रेस जीत गई ये गेंद और गेंद से हमारे कपार 4 रन के लिए फरार। अनिल रोनकी सामना करते हुए शॉट ऑफ लेंथ हवा में खेला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये सेकंड रन में इस कैच क्लब का और पहला पतन विकेट का दिखता हुआ अनिल रोनकी बैक टू डग आउट। पटकी हुई गेंद थी, उछाल मिला, सरप्राइज बाउंस मिला, फिर एक बार टॉप ऑफ द बाउंस आकर खेलने की कोशिश में बल्ले का ऊपरी सिरा लगा, प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ, एलिवेशन भी नहीं मिला था, इसके लिए यह मौका बना और मौके को ताड़ा, कोई गलती नहीं की वहां पर क्षेत्र रक्षक ने। आसान सा कैच, उतना आसान भी नहीं था लेकिन पीछे गए, गेंद पे नजरें बरकरार रखी, शरीर का संतुलन बराबर था और यह पहला विकेट का पतन अनिल रोनकी बैक टू डग आउट। पहला विकेट जल्दी गिरा है, तीसरी गेंद पर सफलता मिली गेंदबाज ऋषिकेश यादव को। दूसरी गेंद पर चौका जरूर लगाया था लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सटीक लाइन और लेन पर इस भी गेंद ने उछाल ली, कंधों का अच्छा इस्तेमाल किया। इस बार गेंदबाज ने वन डाउन स्पेशलिस्ट बैटर के रूप में मैदान में प्रवेश करते हुए बल्लेबाज दशरथ चौहान। 222 रनों का लक्ष्य अगर आपको पहुंचना है तो पावर प्ले का अच्छा उपयोग करना पड़ेगा, ये तो तय बात है। T20 क्रिकेट का फॉर्मेट है, ताबड़तोड़ क्रिकेट इसको कहा जाता है। फार एंड से गेंदबाज इस ओवर की चौथी गेंद लेकर इस बार बल्ले का मुंह खोला, थोड़ी शॉर्ट ऑफ गेंद थी, गेंद के पीछे है, खेल दिया था डीप टर्नमैन की दिशा में और ये 2 रन काफी तेजी के साथ। क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट है, क्या आपसी तालमेल था। देखा वहां पर खिलाड़ी थोड़े लेजी है, लूज है, थ्रो करने में थोड़ी सी क्या समय लगाया इन्होंने, पलक झपकते ही 1 रन को 2 रन में तब्दील किया। बहुत बढ़िया क्रिकेट यहां पर, थोड़ा आलस भरा प्रयास लेकिन ये प्रयास को भुगतना होगा। 1 रन को 2 रन में तब्दील किया। दशरथ ने आते ही खाता खोला, फिर एक बार गेंदबाज पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी गेंद के पीछे है और सही ढंग से खेल दिया था। वन हैंडेड डिफेंसिव पुश बिना कोई रन के। गेंद के पीछे आके सॉफ्ट हैंड से खेलना, अगर बाउंस डिलीवरी को आपको खेलना है तो आपको शरीर से नजदीक आंख के नीचे खेलना होगा, नजर के नीचे, वैसे ही खेलते नजर आए दशरथ। लेकिन इस ओवर में तीसरी बार गेंद पटकने के बाद उठी है, अच्छा बाउंस मिलता हुआ यहां पर गेंदबाज को, जो यहां पर सरप्राइज आश्चर्यचकित कर रहा है बल्लेबाज को। इस बार ऑन ड्राइव किया, 1 रन ताबड़तोड़ निकल गए, स्ट्रोक विद द रन। 1 रन जरूर पूरा करेंगे, ओवर की भी यहां पर समाप्ति होती नजर आएगी। पहले ओवर का यह सफल ओवर समाप्त, 8 रन बिना कोई विकेट को है। 1 विकेट के नुकसान पर अनिल रोनकी पहले ओवर में डगआउट की तरफ लौट चुके हैं। 222 रन का पीछा करना है। आपने देखा होगा कि 50 ओवर फॉर्मेट में जब कालू वितरना और जयसूर्या ये 10 ओवर का जो मैंडेटरी पावर प्ले होता था तब इन सर्कल के ऊपर से स्ट्रोक को खेलते थे। अब ये T20 फॉर्मेट है, अब 6 ओवर में इन सर्कल के ऊपर से आपको खेलना है। ये अलग अलग रणनीति होती है, कोई टॉप ऑफ द बाउंड जाके खेलता है, कोई बड़े हिट लगाने के चक्कर में पहले आते हैं। T20 ये रुकने का नाम नहीं है, ये चलती का नाम गाड़ी, ऐसा ही फॉर्मेट है।
साईराज पाटिल जिन्होंने काफी तेज तर्रार शुरुआत दी थी अपने टीम को बल्लेबाजी करते वक्त। 21 गेंदों में 59 रन, लेकिन 16 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक अपना फास्टेस्ट 50 इस टूर्नामेंट की उनके नाम पे है, फास्टेस्ट 100 उनके नाम पे है। अब गेंदबाजी में करामात दिखाते हुए ऑफ स्टंप पे शॉट ऑफ लेन जिसको खेल दिया था, लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइड, इसके रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। नवीन शर्मा जी को आप देख रहे हैं, बड्डे बॉय फील्डिंग करते हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर पगड़ी पथ पर साईराज पाटिल इस टीम के शुरुआती दौर के बल्लेबाज और शुरुआती दौर के गेंदबाज, स्ट्राइकर बैटर एंड स्ट्राइकर बॉलर ऑफ दिस टीम। ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, सक्षम खिलाड़ी है, निकले अपने बॉलिंग मार से। ये पटकी हुई गेंद थी और ज्यादा उछाल लिया गेंद ने, अंपायर के दोनों बाहें फैलाकर इशारा था हुआ वाइड का, और 1 फॉर द ओवर भी अंपायर ने उन्हें बताया। नई गेंद है, इसके लिए पटकने के बाद इसको उछाल भी मिलेगा आपको। आपके कंधों की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है जो आपको गेंद को पटकने के बाद उठाना है। अगर तेज तर्रार गेंदबाज हो तो ये डेंजरस, लेकिन मध्यम गति के गेंदबाज को फिर वो अगर सीने तक उछाल दिए तो फिर स्ट्रोक मेकिंग आसान हो सकती है। इस बार देखिए टॉप ऑफ द बाउंस जाके गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने, डीप थर्ड मैन रेंज में 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 11 रन प्रति ओवर के माध्यम से पहले ओवर से रन बनाने हैं। 1-2 ओवर देख कर, टिक कर, रुक कर, निरख कर, परख कर खेलना होगा। सेट होने के बाद आप सामने अपसेट कर सकते हैं। इस बीच साईराज अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए पटकी हुई गेंद नहीं थी, ये शॉट ऑफ नेट हवा में है, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर है, उनसे काफी आगे गिरती हुई। 2 रन पूरे किए, 30 रन के लिए दौड़ लगाएंगे क्या? नहीं, 2 रन पे संतुष्ट। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। विकास पांडे आपको देख सकते हैं उसी क्षेत्र रक्षण की एरिया में दौड़ लगाई, गेंद को पिक किया, थ्रो किया, 2 रन लेकिन मिले। लेकिन स्ट्रोक में आत्मविश्वास नहीं झलका, पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं। काफी बड़ी मैच है ये, कहानी बयां करेगी आने वाली ओवर है। इस बीच साईराज की गेंद, इस बार गेंद के पीछे हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल आसानी के साथ मुकम्मल किया। साईराज ने पिक किया, गेंद को थ्रो किया बॉलिंग एंड पर, लेकिन बैकअप बहुत बढ़िया है। दोनों बल्लेबाज के आपसी तालमेल यहां नजर आया। भूख लगनी चाहिए, वो जरूर, बल्लेबाज रनों का भूखा हो तो अच्छा लगता है, कभी भी याद रखना। और यही सिंगल डबल लेके स्कोर की टिक टिक और दिल की घड़ी की टिक टिक, ये दोनों चलती रहनी चाहिए। जिंदगी दिल की टिक टिक से चलती है और स्कोर बोर्ड रनों की टिक टिक से चलता है। साईराज फिर एक बार, इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक करने की कोशिश की गेंद, लेकिन शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी जब तक गेंद को पिक करते उठाते, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। छोर बदला, स्कोर बदला, 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन, 15 for 1, जबकि दूसरा और इस मैच का प्रगति पथ पर है। गाड़ी एकदम टॉप गियर में नहीं चलानी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अच्छे ड्राइवर की निशानी, और जैसे देखकर टिककर रुककर खेलो, ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी। पटकी हुई गेंद थी, टॉप एज लगा, किनार लगा, और वहां पे कोई क्षेत्ररक्षक नहीं है, सुनसान नहीं लगा है। गेंद चली गई डीप फाइन लेग क्षेत्र के बाहर, 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति चौके के साथ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद। 19 for 1 after 2 over, chasing a target of 222. You are watching second semi-final between Team FTL and Team Ambernath Rising Cricket Club, last year champion. क्या ये अपना ताज, गए साल का जो ताज इनके सर पर है विजेता का, ये बरकरार रख पाएंगे या नहीं? देखते हैं।
क्या कहानी लिखी है आगे। टीम FTL पीले कलर की जर्सी में, तो ब्लू कलर की जर्सी में देख सकते हैं अमरनाथ राइजिंग क्रिकेट क्लब की टीम को जो बल्लेबाजी कर रही है। काफी दर्शक इस मैच को देखते हुए अभी भी। फील्डिंग में तब्दीली, फार एंड से ऋषिकेश यादव कंटिन्यू करते हुए इस बार बैकफुट पे जाके पंच किया स्ट्रोक को। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन टॉप ऑफ द सर्कल थे। जब तक गेंद वहां पर ट्रैवल होती है 1 रन लेने में सक्षम नजर आए दोनों बल्लेबाज, सक्षम और कामयाब। विकास पांडे जो सर्कल के अंदर टॉप ऑफ द सर्कल खड़े बैकवर्ड पॉइंट की जगह पर। इस बार गेंदबाज सामने वाले छोर से निकले, इस बीच ये गेंद पटकी गेंद थी, यह मिक्स हो गया लेकिन नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। विकेट कीपर के सर के ऊपर से डीप फाइन लेग क्षेत्र का बाहर, यह नसीब का चौका लेकिन 4 रन के लिए सीमा रेखा पार। टॉप ऑफ द बाउंस गए, फिर एक बार उछाल ली गेंद ने, पटकने के बाद उछाल ली। बल्लेबाज हावी होना चाहते थे गेंद के ऊपर, विकेट करना चाहते थे स्क्वायरली की दिशा में, लेकिन ऊपरी सिरा लगा और विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई। इस बार डीप फाइन लेग क्षेत्र के बाहर 4 रन के लिए फरार। चौका जरूर मिला है लेकिन रन होते हैं, जैसे भी हो वो वेलकम ही होते हैं। तीसरा ओवर जारी है। इस बार बैकफुट पे गए, गेंद को खेल दिया था, भले कि बीचों बीच लेकर मिड ऑफ की दिशा में 1 रन जरूर मिलेगा। अगर आप देख सकते हैं फील्डिंग का मुआयना करेंगे तो डीप वाइडिश बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी है 30 गज दायरे के बाहर, और दूसरा डीप स्क्वायर लेग पर 30 गज दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी हैं। बाकी सब खिलाड़ी नियम के अनुसार 30 गज दायरे के अंदर। राइट, यहां पर दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खराब गेंद का समाचार लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ये कनेक्शन संपर्क क्या हुआ, दैट इज अ नाइस पुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इंपैक्टफुल एंड सक्सेसफुल सिक्सर। क्या शॉट था ये, इसको एक्शन रिप्ले बार बार देखें। अगर आप पटकोगे और आपके पास गति नहीं होगी तो फिर ये सीने तक गेंद आएगी और फिर ये मौका देखे लगाया बड़ा सिक्सर। क्या शॉट था ये, 31, कमाल का टाइमिंग, पावर से ज्यादा नजाकत। इस बीच ऋषिकेश फार एंड से टॉप ऑफ द वाला ख्याल किया तो उसे खेल दिया। जब तक गेंद को पिक करते हैं, पहले अटेम्प्ट में तो इसको सफलता के साथ नहीं उठा पाया, 1 रन तो जरूर मिलेगा। आस्ते आस्ते जो रन रेट था वो रन रेट को छूती हुई टीम नजर आ रही है, फॉलो करती हुई। 32 स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, शायद आखिरी गेंद होगी इस ओवर की ऋषिकेश की। सामना करेंगे बल्लेबाज, फिर एक बार पटकी गेंद, इस बार सीधी, ओहो यह आसान सा मौका, रनआउट का भी मौका छूटा, कैच भी छूटा, रनआउट का मौका भी छूटा। ये बहुत ही बड़ी लक, नसीब, ये जीवन दान मिला है। पुल करना चाहते थे, बल्ले पे आई नहीं, मिड ऑफ के खिलाड़ी पे आसान सा कैच, लेकिन होल्ड नहीं कर पाए, जीवन दान मिला है। ये कितना इंपैक्ट रखेगा, इसका क्या असर होगा आने वाला वक्त और ओवर बताएगी। 3 ओवर 33 रन 1 विकेट, 3 ओवर 33 रन 1 विकेट, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 222। और देखिए फ्लड लाइट्स में, दुनिया रोशनी में, मानो यहां पर कुछ अलग ही नजारा दिख रहा है।
ताबड़तोब ये उछाल देखकर विकेट कीपर ने हेलमेट मंगाई है, बराबर है। 33 for 1। गेंदबाज में तब्दीली कमेंट्री बॉक्स एंड से। अब स्पिन आक्रमण को बुलाया गया है। स्पिन आक्रमण जारी होता हुआ कमेंट्री बॉक्स एंड से। अजय मिश्रा जो इस टीम के स्पिन आक्रमण के मुखिया है, अजय मिश्रा अच्छी लाइन और लेंथ पर कंटिन्यू रहते हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि ब्रेक थ्रू दिलाने की, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच जो साझेदारी पनप रही है, जिस ढंग से वो सिंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं डबल्स में, ये भी देखने लायक है। तुरिया रोशनी में अभी विकेट क्या रंग लाती है, ये देखना उचित होगा। क्या विकेट अब किस ढंग से पेश आएगी, ये देखने में बहुत उचित होगा कि विकेट घूमेगी, गेंद रुक के आएगी, क्या सीधे बल्ले पे आएगी, देखते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन आक्रमण, अजय मिश्रा की पहली गेंद अच्छी लाइन और लेंथ पर, ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप पर खेल दिया था, बैक टू द बॉलर विदाउट एनी रन। डॉट डिलीवरी देखने में मिली अजय मिश्रा। इस बार फ्रंट फुट ड्राइव बहुत बढ़िया लाइन और लेन मेंटेन करते हुए अजय मिश्रा पहली गेंद से अच्छी लाइन और लेन पर बरकरार दोनों गेंदों को बैक टू द बॉलर खेल दिया था सीधे बल्ले से। इस बार कदम को बाहर निकाला, डाउन द ट्रैक है, मैदान की दिशा में खेलकर एक रन पूरा किया बल्लेबाज ने। पावर प्ले का चौथा ओवर जारी है, फोर्थ ओवर ऑफ दिस इनिंग इन प्रोग्रेस। 34 for 1। इस बार बैकफुट पे कट किया, नजाकत भरा शॉट, प्लेस क्या बहुत बढ़िया क्या था, गेंद उतनी ऑफ स्टंप से जरा सी बाहर क्या मिली, अपने आप को पोजीशन में लाए, क्रीज के गहराई का उपयोग किया और शरीर से एकदम नजदीक इस स्ट्रोक को खेला। और खास करके इसकी प्लेसमेंट जो थी, जो प्लेस किया था, वो सोने पे सुहागा था। 38 रन, 38 for 1 इस चौके के बाद स्कोर दर्शाता हुआ। शुभम पुण्यार्थी, पिछले ओवर में इनको जीवनदान मिला था, शुभम पुण्यार्थी को उनका साथ दे रहे दशरथ चौहान नॉस्टर ग्राउंड पर जो खड़े हैं। इस बार बैकफुट पे पंच किया कवर क्षेत्र में, गुड शॉट पर नथिंग, स्ट्रेट टुवर्ड द फील्डर। शोएब शेख वहां पर मौजूद है। इस बार ये उठी गेंद टप्पा खाने के बाद चौक से गए बल्लेबाज, खेल तो दिया था, एक रन जरूर मिलेगा शुभम को, लेकिन ये सरप्राइज बाउंस था। 4 ओवर का खेल समाप्त, 39 पर 1 विकेट, स्कोर दर्शाता हुआ स्कोरबोर्ड पर 39 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ओवर टू चेसिंग अ टारगेट ऑफ 222। आप देख रहे हैं अमरनाथ राइजिंग क्रिकेट क्लब के दोनों बल्लेबाज शुभम पुण्यार्थी और दशरथ चौहान को 5 ओवर की शुरुआत होगी फार एंड से। ये 2 ओवर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रन रेट है वो थोड़ा आगे बढ़ा जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा कि वो चेसेबल नहीं है। आपको हर ओवर में चैलेंज मिलेगा। T20 द गेम ऑफ चैलेंज, ये टेंशन देना और लेना, इसका नाम तो T20 है। बहुत लोग दबाव में बिखर जाते हैं और बहुत लोग दबाव में निखर कर आते हैं, इसी का नाम T20 क्रिकेट है। निखरना, बिखरना, उलझना, सुलझना, ये सिंगल जो ले रहे हैं, ये दोनों के बीच का तालमेल मजबूती प्रदान करेगा स्कोर को, और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अपने आप में जागृत भी करेगा।
फार एंड से गेंदबाजी में सायराज पाटिल को एंड बदलकर, जो कॉमेडी बॉक्स एंड से आ रहे थे, उनको फार एंड से मोर्चे पे लगाया गया है। कमान दिए है उनके हाथों में कैप्टन ने, सायराज फ्रॉम फार एंड। इस बार बैकफुट में गए और इसको बेहतरीन कमाल का ये क्षेत्ररक्षण, यतीन मडवी, क्या ये 4 रन तो बचाए उन्होंने। फ्लरिश ड्राइव था, टॉप ऑफ द बॉल आकर खेला हुआ ये क्लासिक कट शॉट था, लेकिन यतीन मडवी ने मानो हवा में बातें करते ही गेंद को लपक लिया। रन लेने का कोई मौका भी नहीं था। देखिए, आपको कोई प्रशिक्षक कोच जॉन्टी रोड्स नहीं मांगता, आपके आप में खुद में यकीन होना चाहिए मैं जॉन्टी हूं, तब जाके ये क्षेत्ररक्षण होता है। इस बार ये अच्छी गेंद, टप्पा खाया, स्लोअर वन डिलीवरी, आइन वक्त पर स्ट्रोक को चेक किया। 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इनके पास जो वेरिएशन है, चेंज ऑफ पेस है, गति परिवर्तन है, जो बैक ऑफ द हैंड गेंद को छोड़ते हैं, ये भी कमाल की है। दोनों बल्लेबाज को टिककर खेलना होगा, देखकर तो खेलना ही पड़ेगा। रेडो का अंबार जो लगा है, इस बार बैकफुट में जाके हल्का तो से खेल दिया, लेकिन पहले अटेम्प्ट में सफलता के साथ पिक नहीं कर पाए यतीन इस बार। और दोनों के बीच में जो तालमेल है, दोनों बल्लेबाज के बीच, ये कमाल का है। तालमेल, जी हां तालमेल। संसार करना है तो मियां बीवी के बीच में, अच्छी कंपनी चल रही तो दो पार्टनर के बीच में, और अच्छा रन लेना है तो 2 बल्लेबाजों के बीच में तालमेल जरूरी है। फिर एक बार गेंदबाज फार एंड से साईराज, इस बार ठीक गेंद बल्ले पे नहीं आई, लेकिन ये अंदरूनी हिस्सा लगकर शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन के साथ सिंगल के साथ आगे बढ़ने की मुहिम में नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे, उतावलापन इनके बल्लेबाजी में नजर नहीं आ रहा है। खराब गेंद का इंतजार करना, और कर भी रहे हैं। कुछ रणनीति को बदला है। 5 ओवर इस ओवर का जारी है। स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 42। इस बार स्लैश इन एयर, कवर के सर के ऊपर से स्वीपर कवर क्षेत्र में जाकर गेंद को लेकर आना ही होगा। गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए फरार। थैंक यू डीजे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन थी, जगह भी दी थी और मौका दिया, और मौके पे ये चौका। दशरथ चौहान के बल्ले से एक आकर्षक स्ट्रोक। इस बार पुल किया है और क्लासिकल टाइमिंग, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। बैक टू बैक दूसरा चौका, ये इस बार क्षेत्र चुना डीप मिड विकेट का, काउ कॉर्नर में ये चौका, और 50 रन पूरे। 5 ओवर 50 रन 1 विकेट। स्कोरबोर्ड कहानी बयां करता हुआ 10 रन प्रति ओवर के माध्यम से रन बनाने में कामयाब हुई है टीम अमरनाथ राइजिंग क्रिकेट क्लब की ये टीम, जबकि चेस कर रही है टारगेट 222 रन का पीछा करती हुई नजर आ रही है। चेस बहुत बढ़िया है। शुभम पुण्यार्थी और दशरथ चौहान के बीच यह अच्छा तालमेल के साथ बनती हुई पार्टनरशिप 45 रनों की पार्टनरशिप अभी तक बनी है। कितनी गेंदों में देखते हैं। सत्ताईस गेंदों में 45 रन। ऐसे समय पे रन आए हैं जब टीम को जरूरत थी। ना हम सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, हम देखते हैं टीम की जरूरत, और जरूरत जो होती है ये पूरी की गई है।
अगर ये पार्टनरशिप और 5 ओवर चली तो फिर की बात है। चलते हैं मैच की ओर। आखिरी पावर प्ले का ओवर, फिर अजय मिश्रा अपना मार्गक्रमण जारी रखते हुए बैकफुट पे गए, जगह बनाई, लेकिन खिलाड़ी को पाया कवर क्षेत्र में। स्ट्रेट टू द फील्डर विदाउट एनी रन। गुड स्ट्रोक फॉर नथिंग। ये सीधा उड़ाया, वो हो ब्यूटी, व्हाट अ शॉट दैट इज, दैट इज अ ब्रिलियंट हिट। स्ट्रेट 6। शुभम पुण्यार्थी, थैंक यू डीजे। शुभम पुण्यार्थी नाम में है, शुभम है, जीवन दान मिला है और जीवन दान का पूरा फायदा उठाते शुभम। ये कमाल का स्ट्रोक था, हालांकि लो ट्रैजेक्टरी गेंद थी। बैकफुट पे जाके सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसे स्ट्रोक को खेलना ये आसान बात नहीं है। इस बार बड़ा हिट करना चाहते थे, फ्रंट फुट पर आकर अंदरूनी सिरा लगाया नहीं। देखते हैं, बाय के रूप में रन आता हुआ। अंपायर ने कहा विकेट कीपर के दस्तानों से ये चिपक कर गेंद निकली है। एक्स्ट्रा रन में 1 रन शुमार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। अभी तक पीछा बहुत अच्छा हुआ है। 1 रन जरूर मिलेगा। देखिए, इसको कहते हैं सिंगल के साथ आगे बढ़ना। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी की गीत गाए जा। बूंद बूंद से सागर बनेगा। संयम चाहिए, पेशेंस, यू मे से द टेम्परामेंट। बहुत बढ़िया दिखा है अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने। अभी इस बार देखिए, पुश करो और खुश रहो। पुश किया, 1 रन लिया। पचासी गेंदों में चाहिए 163 रन। इस बार ये 1 रन मिला। देखिए, रन कितने भी बड़े हो, फिगर बड़ी हो, लेकिन खेलने की जिगर अपने आप में रखनी चाहिए, तब जाके मैच बनती है। चलिए, 6 ओवर का यहां पर इनिंग समाप्त हुई। पावर प्ले का बंधन उठा है। स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 60 रन, यानी 10 रन प्रति ओवर के माध्यम से रन बनाने में कामयाब हुए हैं। अनिल रोलंकी एक ऐसा बल्लेबाज था जो मैच का रुख अपने फेवर में पलटाने की ताकत, दमखम रखने वाला था। उसके विकेट जाने के बाद टेंशन नहीं लिया। चलते हैं अगले मैच इनिंग की कहानी सुनते हैं। फिर एक बार हमारे कॉर्पोरेट कमेंटेटर, इंग्लिश के बेहतरीन समालोचक आनंद श्रेष्ठ के जुबानी अगली मैच की कहानी। ओवर टू आनंद। Thank you, Bunty sir. At the end of the 6th over, 60 runs on the board. Coming on to bowl, change in the bowling lineup from the far end, Vikas Pandey. The man with the golden arm, I must say. The previous match, 2 balls, 2 deliveries, won the match for his side. Going right arm over the wicket for the first time in this match. Dashrath Chauhan on strike. Good delivery this. Wanted to hike it on the onside. Just a fine edge down to the left-hand side of the fine leg fielder. Just a single to start over number 7th. 61 for 1. Just a slight discussion between both the batsmen. This partnership has been really, really good for the batting side. Dashrath Chauhan batting on 30 of just 19 deliveries, and Shubham Punyarthi batting on 25 of just 16 deliveries. Shot of leg delivery, went on the back foot, pulled nicely down to the deep wicket region for a maximum. Brilliant hit that one.
67 on the board. Thank you, DJ. Thank you, DJ. This time just angling in a little bit, gave it a more pace than the earlier delivery. Giving no room this time. Just a fine dab down to the backward point region. Down to Yatin Madhvi. Away they went for a quick single. 68 on the board. 3 deliveries still left in the over. Back on strike, Dashrath Chauhan. This time just angling in once again a little bit. Sort of good length area. Good dive from the fielder at the long on region. Running down to the cow corner. Good relay throw by the fielder station at the mid wicket region. Good top notch. Good fielding effort. 70 for the loss of 1 wicket. Good partnership this. 10 runs already from this over. This time little bit outside, nicely cut it down to the fielder. There is a slight miscommunication. Throw it at the striker and a dive. Has it saved the batsman? No signal from the umpire. Really good running from Shubham. Wasn't looking like there was a single over there, but made it. Really good running. Shubham Punyarthi, really good dive which saved him. .71 for 1. There's a slight delay. Really good dive to save his wicket there. Giving more than 100% on the field. Shubham Punyarthi. 32 of just 18 deliveries. Has really looked well while pulling those short of length deliveries. 2 big heads down to the deep square leg region. Quite a foolish delivery, right in the block hole. Brilliant delivery to end over number 7th. 71 on the board for the loss of 1 wicket. This is the second semi-final for the day and this event 13th edition of Upa Mukhyamantri Chashak, famously known as Thane Premier League. What a platform this has been. One of the main breaker-in-chief being honorary Mr. Vikas Repale sir, what a visionary. Under the guidance of Deputy Chief Minister of Maharashtra, honorary Mr. Eknath Shinde sir. This has been 13th year on a trot. What a platform. Many of the players being selected in MPL. Going, rubbing shoulders, going hand in hand with some of the IPL players, current Ranji players. Definitely, this has been a showcase of great players out here. At the end of the 7th over, 71 for 1. Starting up a new over from the commentary box end. Akash Sharma to continue. A little bit tossed up delivery, played down the ground, down to the long on region. Flat bat at 6.
welcomes Akash Sharma with a flat batter, 6 down the ground. This time a little bit flatter outside the off stump. Away to go for a quick single throw is at the striker end. Good running this. Single. Just a front foot press down to the cover region. Just a quick single. Next delivery. Little bit tossed up delivery, wrapped on the pads. Went down to the fine leg region. Just a leg by being signaled by the umpire. Definitely would have gone down the leg side. 8 runs of 3 deliveries. Akash Mishra in action, just bowling a little bit flatter this time. Nicely played down the ground. Off the front foot. Sairaj Patel in action. $80 on the board. Little bit tossed up delivery, but sort of good length area. Just leaving the batter. Dot delivery. Good comeback. This has been from Akash after that big hit of the first delivery. Goes on the back foot, cut it nicely down to the backward point region. Yatin Madhvi once again doing a really good effort over there. Ends over number 8. 80 for the loss of 1 wicket. Starting a fresh spell, Arun Yadav has been brought into the attack. He'll go right arm over the wicket, down from the opposition end. On strike, Dasrath Chauhan batting beautifully, 41 of just 24 deliveries at the non-striker end. Shubham Punyarthi, 32 of just 22 deliveries. Short of length delivery to start with. Couldn't get out of the middle of the bat. Down to the long on region. Just a single. 141 runs required of 71 deliveries. The asking rate 11.92. This is going to go down the wire. Short of length delivery. Swivel across. Pull nicely down to the mid-wicket region. Good fielding though. On a bounce. Just a single. Good delivery it was in position to pull it. Didn't get, I believe, of the sweet part of the bat. Luckily though, fell just short of the fielder at the mid-wicket region. This time wanted to play it on the up. Good delivery, just angling in a little bit. Take the enough of the bat. Goes down to the long on region. 3 singles of this over. Has started well. Arun Yadav. Good start of his spell. 8.3 overs. 83 for 1. Going along nicely. Those two batters. 139 runs required. Short of length delivery. This is pulled nicely, handsomely. Down to the deep square leg region. Away she goes for a maximum. Thank you, DJ.
Shubham Punyarthi moves on to 39 of 24. This time just angle in a little bit on a sort of good length area. Just a single, 90 on the board. Last delivery of the 9th over. Required run rate of 11 at the start of this inning and maintained 10 and over. The asking rate now 11.82. Good delivery, driven on the up nicely down the ground, down to the long off region. Just a single to end over number 9th. 91 for 1. Going along nicely. Still require 131 to win of 66 deliveries. Thank you, DJ. Akash Sharma to continue from the commentary box and 91 for 1, 131 required of 66 deliveries. Toss of delivery, paid down the ground, down to the long on region. A good juggling catch this from Sairaj. Good delivery to start with after the fall of a wicket. New batsman coming in, Prasad Pawar. Akash Sharma getting that second wicket. Good partnership it was. Just wide outside the off stump. Nicely cut it down to the extra cover region just for a single. Opens his account with that single, Prasad Pawar. 3 deliveries still to go. 130 required of 63 deliveries.
Knocks on the back foot. Played down to the extra cover region. Good fielding. Good running though. Good cricket all around. Good delivery. It was a rising delivery leaving the batsman. Went on the bat foot. Cut it nicely to the cover region. Good sharp take and throw to the bowler's end. And good running as well. 93 for 2. 2 deliveries left in the 10th over. Getting closer and closer. This has been a very good over for a bowling side. Not given away runs in this over and a wicket as well of the set batter. Dashrath Chavan back in the dugout after scoring good 44 runs for his side. Going down the track. Very well bowled delivery. Just coming in with the angle. Couldn't do anything more to that delivery. Prasad Pawar just played it back to the bowler. Tossed off delivery. Wanted to drive it on the Fox. The batsman went straight to the wicket keeper. Good couple of deliveries to end over number 10th. 93 for 2. Still require 129 to win of 60 deliveries. 12.90 is the asking rate. Really good chase this. It was 90 at the end of the 9th over. Really good comeback over. From Akash Sharma, it was a brilliant over. To continue from the far end, Arun Yadav. At the striker end, Shubham Punyarthi. Batting brilliantly on 41 of just 26 deliveries. This time played uppishly down the ground, down to the long on region. Couple of bounces to the fielder. Just a single. Moves on to 42. Shubham. Prasad Pawar back on strike. Just has come in, just faced 4 deliveries. One under, single under his name. Just checking the field, just taking guard once again. Needs to stitch a partnership at least 40 to 50 runs to be in the contest. This time nicely bowled, just angling in. Just flick of the wrist down to the deep square leg region. They're going for the second. Throw is coming at the non-striker end. Just a wayward throw. Couldn't collect. Couldn't be collected by the bowler. Couple of runs. 96 on the board. Four deliveries to go in this over. Prasad on strike. Good delivery this. Just a gentle push down to the cover region. For a quick single they go. 97 on the board. 10.3 overs. Last 2 overs have been really good effort from the bowling side. Slowing up a little bit. Shot of delivery just outside the off stump. Nicely cut it. But there is a deep backward point in place. Good fielding. Couple of runs down to Vikas Pandey. Stationed at deep backward point region. Good fielding. 99 on the board. 123 required of 56 deliveries. A really good fight back after losing first wicket quite early. Short of length delivery, not there to pull. Played down to the cover region. Good fielding this time once again by Vikas Pandey. Brought in inside the 30-yard circle in the cover region. 100 up for team Ambernath Rising Cricket Club. The defending champions of previous year.
122 required of 55 deliveries. Last delivery of the 11th over. This is bowled nicely and a little slight misfielding from Naveen Sharma at the cover end, and away she goes for a boundary. 104 on the board for the loss of 2 wickets at the end of the 11th over. Just like the ball following him, he was at the deep backward point region. Couple of runs over there. Did a good fielding job over there. Then went down to the cover region. Just a single off his hand. And now a boundary. The slight misfielding down to the cover region. 11 overs done. 104 on the board. 118 required of 54 deliveries. Gonna be a really splendid effort from the defending champions if they are to complete this target. Still continuing from the commentary box end. Akash Sharma to continue. Good start this of the 12th over. Just a little bit wider on the off stump. Wanted to cut it. No connection with the bat. Shubham Punyarthi on strike. 45 of 30 deliveries. Tossed up a little bit. Just angling in. Just take a inner half of the bat. Goes down to the cow corner region. They're going for the second. Quite easily that second was converted. Good positive running. Good positive intent from both the batsmen. 106 on the board. Required run rate inching towards 14 runs per over mark. Right now it is 13.38. Just a little batter wide outside the off stump. Stumbling effort from Yatin Madhvi. But good stop. Saved 3 runs for his side. Just a single. Moves on to 48. Shubham. Coming back on strike. Prasad Pawar. 3 deliveries to go in the 12th over. Akash Sharma 2.3 overs. 1 for 13. A reverse paddle sweep he wanted to play, but no connection with the bat. Wrapped on the pads, but the impact must have been outside the off stump. Definitely saving him. Still 107 on the board. A toss-up delivery. Wide slog. Down to the deep square leg region. He's racing towards the fence. Very good hit that one from Prasad Pawar. Just on 1V. Swivel across. Nicely played. Down to the deep square leg region. 111 for 2. 1-1-1. That's what we call Nelson score. 111 on the board. Last delivery to go. Flatter this time. Nicely played. Down to the cow corner region. A very good effort. Outstanding effort. That one gave it everything at the last moment. Dived it along. What an acrobatic save that was from Ajay Patil. 2 runs added to the score. 113 on the board at the end of the 12th over. You can watch that action replay again and again. Just as it was looking like it was going down to the boundary. A full both hand stretch jump down to the cow corner region to save couple of runs for that side. That's what brings jubilation in the crowd as well as the team. That was motivates a team. Such kind of efforts. Really great effort to end over number 12. 109 required of 48.
getting closer and closer, a little bit stiffer and stiffer for the defending champions. But they do have a good batting lineup, a strong middle order and a lower order as well. Ajay Mishra to continue from the opposition end. Left arm around the wicket. Just a slight discussion before starting the new over with the wicket keeper. 113 already on the board. The asking rate 13.62. Just creeping a little bit up and up. Flatter played with an angle bat down the ground. Away she goes for a boundary. That's a half century for Shubham Punyarthi. 52 of 33 deliveries. Been a really good effort from Shubham. Congratulations. 52 of 33. He knows, but still the job is still unfinished. Just raises and acknowledges his team out in the dugout. Good hit, that previous one. Flat batted down the ground, down to the long off region. 52 of 33. Still needs to be there till the end. Take it deep. 105 of 47. Ajay Mishra, 2.1 overs, none for 19. Flatter once again, tried to play a reverse shot and completely miscues it. Wicket number 3 for FTL. They are jubilant. Going back in the dugout after playing a fine knock of 52 runs. Shubham Punyarthi, 52 of 34 deliveries, really set a platform for the incoming batsman. New batsman coming in. Advay Shidai. A terrific all-rounder, Advay, now coming on the crease. Tall, strong player, left-hander. 105 required of 46 deliveries. Still 7 wickets in his hand. Tough but chaseable. We have seen many of this such matches changing at the nick of time. Just they need at least 2 or 3 good overs. They will be back in the game. 105 runs required of 46 deliveries. Flatter just outside the off stump. Wanted to cut it off the back foot. Good delivery to the new batsman. 117 on the board. Just a little bit tossed up delivery than the previous one. Not that flatter. Played nicely down to the mid wicket region. Opens the account with that single. Advay. Back on strike. Prasad Pawar. Batting on 14 of just 10 deliveries. Just slightly change in the fielding position, just as the right-hander batter coming on strike. Swill across, played down to the square leg region and a wicket. Second success of the over for Ajay Mishra. Changing the tide, changing the game in his team's favor. Fourth wicket down for Ambernath Rising Cricket Club.
New batsman coming in, Jitesh Raut. This has been a brilliant over. Two success in this over, couple of success in this over for Ajay Mishra. Good delivery, there's angling in. A third success of the over, fifth wicket down. Really good delivery this. Just leaving the batsman after pitching. Knocked out the off stump. What a game-changing over this has been from Ajay Mishra. Brilliant. It's just the word. (118 for the loss of 5 wickets. New batsman coming in, Saksham Jha. Had done really well with the ball in his hand. Now need to will out his willow. Vikas Pandey to continue. Nicely played down the ground, down to the long on region, just for a single. Saksham coming on strike. Advai. At the non-striker end, 2 of just 3 deliveries. Getting tougher and tougher for team Ambernath Cricket, Rising Cricket Club, the defending champions of the previous year. 103 of just 41 deliveries. Vikas Pandey in the attack. In this 14th over of the inning. Short of length delivery, just angling in a little bit. Good delivery, that one. First one leaving out, going out, just leaving the batsman. This time coming in. Good variation on offer. Vikas Pandey, 1.2 overs, none for 12. Once again angling in. Couldn't get from the meat of the bat. Played down to the cow corner. Good fielding, good attacking fielding there. Just a single. Already in the 14th over of this inning, 13.3 overs, 120 on the board. Back on strike, Advai. This time, a long heave, down to the long on region, 6th wicket down. A success for Vikas Pandey in this over. Good catch held by Rishikesh Yadav. Good well-judged catch by Rishikesh Yadav down to the long on region. 6th wicket down. Going like 9 pins right now. The defending champions, Ambernath Rising Cricket Club. The second wicket partnership was really good for the batting side. But after that, wickets have crumbled just like 9 pins. 6th wicket down in 13.4 overs. 2 deliveries to go in the 14th over.
New batsman coming in, Mayur Divekar. Bowled well today, both the batsmen who are as the crease, Saksham Jha and Mayur Divekar. Step task ahead, 102 of 38 deliveries. Good delivery, just angling in. Curtailing in, dot delivery. Some real good stuff from Vikas Pandey in this over. Just angling in once again on a sort of good length area this time. Just played down to the square leg region. Just settles for a single. Good fielding by Shoaib Sheikh. Running in 15 to 20 yards from fine leg region. Covering the ground down to the square leg region. At the end of the 14th over, 121 runs on the board for the loss of 6 wickets. Already in the first semi-final of this event, Eknath Shinde Cricket Club 2 team, they have already made it to the finals. Just 6 overs away to know who is the second team to enter the finale. Ajay Mishra to continue. Last over of his spell. This is a hat-trick delivery and a catching player at the slip cordon. Nicely bowled, angle in, nicely cut it between the fielder, third man and the backward point region. Good valiant effort from Yatin Marvi at the backward point region, but a boundary. 125 on the board, 97 required of 35. Need a miraculous effort from those two batters. After 14 overs, FTL were at 154 for 1. And this is nicely hit. Down to the cow corner region for a maximum. Giving charge. Upping the ante this time. Mayur Divekar. A boundary down to the backward point region. And now a 6 down to the cow corner region. 131 on the board. 91 required of 34 deliveries. Nicely driven on the up, straight to the cover region. A dot coming up. 10 runs already of this over. The asking rate 16.55. Tossed up delivery. Just wider out of the off stump. Flat batter played on the right side of the long on fielder. Just a single. Brings Saksham on strike. 90 of 32 deliveries. Need to go all guns blazing. Still 4 wickets in hand. Need to fight. This time, nicely played handsomely down to the deep extra cover region. Away she goes. Very good fielding effort. We'll have to wait for the umpire signal. Throw is coming at the non-striker end. A wayward throw. They're going for the third. 3 runs completed. Really, really good effort from the fielder. Vikas Pandey at the deep backward point region. Just it was looking like it was racing towards the fence. Good football skills. Ran at least 25 to 30 yards on his right. Really good effort. Saving a run for his side. Flatter this one. Pulled nicely down to the deep square leg region. Good fielding once again. Couple of runs. To end over number 15, 137 on the board. 85 required of 30 deliveries. Will there be a twist in this match? Will this be a magical inning from both the batsmen? We'll see the last 5 overs of this crucial encounter. The second semi-final of this edition, 13th edition of Up Mukhyamantri Chashak.
Thane Premier League will go back. There will be a change in the commentary box and welcome once again on board in the commentary box panel. Voice of Thane, Bunty sir with us. Over to you. थँक्यू आनंद. शेवटचे काही क्षण या सामन्यातले आपण बघतोय. 5 षटकांचा खेळ बाकी आहे. मोठं लक्ष पार करायचं आहे 222 धावांचं. म्हटलं तर हिमालय चढायचं होता पण ते पार करणं तेवढं महत्वाचं होतं. छोटी पार्टनरशिप आपण दुसऱ्या विकेटला बघितली. चांगलीच भागीदारी बघितली. त्यानंतर ज्या विकेट पडायला लागल्या एका षटकात 3 विकेट जेव्हा गेल्या तेव्हाच तिथे सामन्याचं थोडं ट्विस्ट निर्माण झालं. आता 30 चेंडूत करायच्या आहेत त्या 87 धावा. कठीण 85 धावा. कठीण हा शब्दच क्रिकेटमध्ये नाही आहे. अशक्य ते शक्य तुम्ही करू शकता जेव्हा तुमच्यामध्ये ती बनवण्याची क्षमता असलीच पाहिजे. बघूया दोन्ही फलंदाज मैदानात कष्टाची पराकाष्ठा करतील की नाही. गोलंदाजीत बदल कॉमेंट्री बॉक्सकडनं आपण पाहतोय. मध्यम गती तेज आक्रमण साईराज पाटील आघाडीचा गोलंदाज आघाडीचा फलंदाज यावेळी बॉलिंग मार्कवर. साईराज पहिला चेंडू आखो टप्प्याचा सरळ खेचलाय सरळ उडवलाय. पंचांचा इशारा हा सीमारेखावरून षटकार. वारंवार लागोपाठ असेच मोठे स्ट्रोक मोठे शॉट नक्कीच तुम्हाला तारतील परंतु त्यांचा जो प्रयत्न तो वाखाणण्याजोगा आहे. साईराजच्या पहिल्या चेंडूवर आक्रमण केलंय. दरम्यान साईराजचा स्लो रन डिलिव्हरी थोडा हळवार सोडलेला चेंडू बॅकअप द हँड. बोटा फिरवली होती चेंडूवरनं. खेळल्या चेंडूला बरोबर लॉंग ऑनच्या दिशेला 1 धाव मिळते. स्ट्राईक बदलतोय. कमीत कमी 17 धावा षटकांमागे आता रन रेट हवा असेल जर तर तुम्हाला पहिल्या चेंडू पासूनच आक्रमण करावं लागेल. आपल्या भातातले सर्व स्ट्रोक तुम्हाला वापरावेच लागतील. साईराज पुन्हा एकदा यावेळी क्रॉस बॅटेड चांगला खेळलाय. गॅप मधून चेंडू निघून जाईल. यावेळी लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या मधून जागा शोधली. टायमिंग चांगलं होतं त्यापेक्षा तो प्लेस चांगला केला होता. चेंडू जातोय सीमा रेखा पार चौकार. या षटकात आतापर्यंत 11 धावा आल्या आहेत. दोन्ही फलंदाजांनी आपसी काहीतरी तालमेल बातचीत केली आहे. शेवटपर्यंत पाठ टेकवत नाही तो मल्ल. शेवटपर्यंत तलवार मॅन करत नाही तो मावळा. आणि शेवटपर्यंत आपली विकेट टाकत नाही तो आहे नेटाने खेळणारा फलंदाज. तेच गुण आपण पाहायला मिळत आहेत. जबरदस्त स्ट्रोक मेकिंग ताबडतोब फलंदाजी पाहायला मिळते. वारंवार लगातार बार बार सदाबहार अशी फलंदाजी नक्कीच महत्वाची. शेवटचे काही षटकं बाकी आहेत. 5 षटकं बाकी आहेत. अजून 4 षटकाची शिल्लक आहेत. पटलेला चेंडू उसळी घेतोय. पंचांचा इशारा महत्वाचा आहे. पंचांनी सांगितलंय हा चेंडू अवांतर आहे. हा चेंडू परत टाकावा लागेल. जास्त प्रमाणात उसळी घेतली होती. पंचांनी पायपंचां मुख्य पंचांनी अवांतर घोषित केलं वाईट स्वरूपात. अतिरिक्त धावसंख्येत 1 धावांची भर पडेल. साईराज पंचांशी बोलताना आढळतोय. नक्की खांद्याचा वापर केला होता साईराजनी. उसळी घेतली होती चेंडूने. आपटेला चेंडू होता. उसळी घेतली होती. फलंदाजाने सुद्धा तो पाहिला. साईराज कन्फर्म करतोय 1 फॉर द ओव्हर पंचांनी सांगितलंय. या षटकात आतापर्यंत धावा किती आल्या त्या बघूया. 12 धावा आतापर्यंत या षटकात आले आहेत. पंचांकडे अजूनही हितगुज सुरू आहे. थँक्यू धन्यवाद. साईराज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. हळू सामना जरी अंतिम क्षण असला तरी लढाई मजबूत सुरू आहे. संघर्ष सुरू आहे.
दरम्यान सायरीचा चेंडू फुलरलाईन डिलिव्हरी ठीक बॅटवर येत नाहीये. ऑन ड्राईव्ह करतायत अलॉंग विथ द ग्राउंड. डाउन द ग्राउंड towards the long on region. Single is on. Single is easily taken by both the batter. Score moves to 150. 150 up for the team Ambernath Rising Cricket Club. 6 गडी बाद झालेत. साईराज संतपणे आपल्या गोलूंच्या मार्कवर निघताना आपण बघतोय. दरम्यान हा चेंडू हा लेग साइडला फुल टॉस आमंत्रण दिलं होतं पण कन्वर्ट करू शकला नाही. हा गुडघ्यावरचा फुल टॉस होता. डायरेक्शन थोडं चुकलं. प्लेसमेंट. एक धाव मिळते. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक गस्त घालतोय. टियाळणी करतोय. एकच धाव मिळेल. उचित फायदा या चेंडूचा घेऊ शकला नाही फलंदाज. दरम्यान साईराज पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्सकडनं सज्ज होतोय. यावेळी परफेक्ट कनेक्शन आहे पण क्षेत्ररक्षकाने आटोकाट प्रयत्न केला. डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. पंचांचा इशारा महत्वाचा आहे आणि पंचांनी तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे. हा चेंडू सीमारेखा पार झालाय का? कारण की लो फुलटॉस होता पण यावेळी टायमिंग जबरदस्त केलं. लो डाऊन फुलटॉस अशा प्रकारे मिडल ऑफ द बॅट घेऊन फक्त गतीचा वापर केला गोलंदाजाच्या. त्याला पाठवलं डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं. तिथून क्षेत्ररक्षकांनी टाइमली जम्प पण केलं होतं पण त्याच्या वरून चेंडू गेलाय की काय बघूया. तिसऱ्या पंचांची मागणी केली गेली. पंच समीर दिरवाणी यांनी चेक करायला सांगितलं. लेट चेक कारण फार महत्वाचा चेंडू होता. धावही महत्वाच्या गणल्या जातील. चौकार काय सर? आणि हा चौकार आहे. पंचांनी घोषित केलं. दॅट्स अ बाउंड्री. 155 धावा धावफलकावर. षटकांच्या अंती समाप्ती. 16 षटक पूर्ण. 155 धावा. 6 गडी बाद. आता येणाऱ्या 24 चेंडूंमध्ये गरज आहे ती 67 धावांची. 67 रिक्वायर्ड विदिन 24 डिलिव्हरीज. काही घडू शकतं. क्रिकेटचा खेळ मित्रांनो गेम ऑफ बिग 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 अनसर्टनिटी ज्याला आपण म्हणतो. ज्याची भविष्यवाणी कोणी कधी करू शकत नाही. तो खेळ सर्वांना एकत्र आणणारा संघर्ष याच्यामध्ये आहे. 24 चेंडू 67 धावा. सरासरी आता तरी 16.50. गोलंदाज विकास पांडे. सामना रंगलाय. विकास पांडे हे असे गोलंदाज आहेत ज्यांच्याकडे वेग जास्त आहे. बघूया पहिला चेंडू घेऊन. यावेळी कमालीचा वेग बघा किती वेगात चेंडू इन स्विंग हाताला टप्पा एकदा पूर्ण केले. दुसरे घेण्याचा प्रयत्न केला. पाहिलं क्षेत्ररक्षक चेंडूवर हवी होतोय. एखाद्यावर समाधान मानलं. पांडे शॉर्ट रनअपनी गोलंदाजी करतात पण चेंडूला ज्या प्रकारे तो गती वाढवतात. पेस आहे त्यांच्याकडे. विकास पांडे याची लाईन ऑफ लेंथ लवकर पिक करणं महत्वाचं आहे. दरम्यान हा चेंडू छोटा प्लेन आणि बघा का वेगात निघाला चेंडू. फलंदाजी बॅट जिथपर्यंत जाते चेंडूवर तितक्या वेगात चेंडू निघाला आणि वेलकेट बाय द विकेट किपर बिहाइंड द स्टंप. चांगलं कलेक्शन पाहायला मिळालं विकेट किपरचं यष्टिरक्षकाचं. हा सुद्धा पेस होता. त्याच्यावर स्वार झालेत. 1 बाउन्स. क्षेत्ररक्षक आहे दक्ष. एकच धाव मिळेल. इजी स्ट्रोक मेकिंग आता साध्य होत नाहीये. नक्कीच यावेळी सरळ उडवलाय. लॉंग ऑफला आहे तिथे प्रोटेक्शन. क्षेत्ररक्षक आहे. एकच धाव मिळेल पण एक एक धावांनी नक्कीच अपेक्षा पूर्ती होणार नाही. मराठीत म्हटलं तर पोट भरणार नाही.
षटकार चौकाराची ज्यावेळी नितांत गरज आहे, पण गोलंदाजी टिचून केली जाते. स्टंप मध्ये चेंडू फिनिश केला जातोय. यावेळी मिस टायमिंग आहे, नाही आर पारच आहे. लॉंग ऑनच्या क्षेत्रावळी क्लिअर केलंय. षटकार आहे, फक्त गोलंदाजच्या गतीचा वापर, टायमिंग आणि कनेक्शन, संपर्क यालाच म्हणतात. गणित जुळलं, बेरीज 6 धावा. जबरदस्त खेळ सुरू आहे. व्हॉट अ मॅच दॅट इज. अमरनाथ रायझिंग क्रिकेट क्लब अजूनही याला म्हणतात संघर्ष, फाईट. धावसंख्या 164, 6 गडी बाद. शेवटचा चेंडू येणं शिल्लक. या षटकात 9 धावा आलेत. या षटकात जर शेवटच्या चेंडूवर चौकार आला तर, पण क्रिकेटमध्ये तर आणि जर याला काहीच महत्व नाहीये. काहीतरी कर हे याला महत्व आहे. दरम्यान खेळ थोडा थांबलाय. सामना अटीतटीचा आहे, नो डाऊट. असं वाटत होतं 6 गडी बाद झाले तेव्हा, जेव्हा एका षटकात 3 गडी बाद झाले, हा सामना एकतर्फी होईल, परंतु नाही. गतविजेता संघ अमरनाथ रायझिंग क्रिकेट क्लब अजूनही लढत देतोय. क्या बात आहे. ही मॅच नक्कीच उत्कंठावर्धक क्षणाला येऊन ठेपली आहे. विकास पांडे फॉरेनकडनं लास्ट बॉल घेऊन, शेवटचा चेंडू घेऊन परत आपल्या मार्क्सवर, कोणत्या मार्क्सवर ही डिलिव्हरी. यावेळी पुन्हा बॅट फिरवली आहे. क्रॉस बॅटेड शॉट, सिंगल इज ऑन. दुसरी धाव घेतील का नाही. क्षेत्ररक्षक घेतोय पहिल्या चेंडूवर, एकेदार समाधान. या षटकात 10 धावा आल्या एवढी निश्चित. तसं म्हटलं तर हे षटक ठीकठाक आहे टीम FTL साठी. आता 18 चेंडूत गरज आहे 57 धावांची. 3 षटकांचा खेळ बाकी, 18 चेंडू शिल्लक, 57 धावांची गरज. संघर्ष मैदानावर सुरू आहे. हे षटक आता एकतरी षटक मोठं बनवायला लागेल. मोठं यावंच पाहिजे टीम अमरनाथ रायझिंग क्रिकेट क्लबला. जर आपल्याला त्यांच्या डोक्यावर असलेला विजेतेपदाचा मुकुट जर कायम ठेवायचा असेल तर, आणि तरच आता 3 ओव्हर कुठल्या गोलंदाजी करतील त्यावर महत्व आहे. कर्णधार या संघाचे, FTL संघाचे नवीन शर्मा कोणाला चेंडू देत आहेत हातात. साईराज पाटीलच्या हातात विश्वासाने चेंडू सोपवलाय. या संघाचा आघाडीचा अनुभवी असा खेळाडू, दिग्गज श्रेणीमध्ये येणारा साईराजचं षटक महत्वाचं आहे. पहिला षटक त्यांचं, या अगोदर षटक थोडं मागणं ठरलं. हे षटक महत्वाचं आहे साईराजचं. 18 चेंडू 57 धावा, सरासरी 19 धावांची षटकामागे. कठीण पण नामुमकिन नाहीये. हा शॉर्टम पूल गॅप मध्ये आहे का नाही. क्षेत्ररक्षक आहे खोलवर तैनात. 1 धाव मिळेल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, आणि आता कुठे हा नानामध्ये. शेवटी त्यांनी क्रीज सोडली, कारण पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये योग्य पिक करत नव्हता, त्यामुळेच एका धावेचं रूपांतर 2 धावांमध्ये. पण लॉंग ऑफच्या खेळाडूचं कौतुक केलं पाहिजे. तो कमीत कमी डीप मिडविकेट पर्यंत चेस करत होता आणि बॅकअप देत होता. ही महत्वाची गोष्ट. यतीन मडवी यांनी बॅकअप दिलं, हे महत्वाचं आहे. दरम्यान 2 धावांनी सुरुवात केली आहे षटकाची. आपटलेला चेंडू उसरी घेतोय. डीप लॉंग ऑन आणि मिडविकेटच्या मध्ये यतीन मडवीचा जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. 1 स्टॉप आणि थ्रो इन 1 ऍक्शन.
यतीन मडवीचा कमालीचा फिटनेस आहे आणि एक उच्च दर्जाचा क्षेत्ररक्षक सुद्धा आहे तो. दरम्यान साईराज योग्य रीतीने पावलं टाकतोय. फलंदाजा मनात काय ते जाणतोय. सामना अजूनही संपला नाहीये. लढत सुरू आहे. संघर्ष जारी आहे. पिक्चर अभी भी बाकी है. फुलटॉस लॉंग ऑफच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक आहे. शरीर आणतोय चेंडू मागे. कीप हिज बॉडी बिहाइंड द बॉल. एकच धाव मिळेल. तीन चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 4 धावा आल्या आहेत. षटक आतापर्यंत ठीकठाक. साईराज पाटीलचं 3 चेंडू शिल्लक षटकात. षटकात 19 धावा करायच्या आहेत. हा उडवलाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं. पाहिजे तो षटकार आलाय डीप लॉंग ऑन वरनं. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये षटकार. काय टायमिंग आहे. गतीचा वापर केला. क्रॉस बॅटेड हाय हँडसम इट ओव्हर द लॉंग ऑन. धावसंख्या 175. 2 चेंडू शिल्लक आहेत षटकातील. यावेळी स्लॅश केला हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे पण त्याचा खूप पुढे चेंडू पडतोय. चांगलं कव्हर केलं एरिया. स्वतः नाराज आहे फलंदाज. 1 धाव मिळते. सिंगल्स घेतली आहे. बरोबर फुलर लेंथ होती. जागा बनवली होती. स्लॅश केला होता. स्लॅश इन एअर. पण स्वीपर कव्हरला आहे क्षेत्ररक्षक. 1 धाव मिळते. साईराज शेवटचा चेंडू घेऊन. यावेळी सरळ केलेला. मिड ऑफला 1च धाव मिळेल. वेल बॉल्ड. खोलवर टप्पा ठेवला साईराजने. षटक नंबर 18 इथे पूर्ण होतोय. आता 12 चेंडूत पाहिजेत 45 धावा. आता तुम्हाला प्रत्येक चेंडूला करावी लागेल हवाई यात्रा, हवाई सफर. नाहीतर सफर इथेच काही घडू शकतं. काही घडू शकतं. हा खेळ आहे क्रिकेटचा. ही क्रिकेटची माती जोडती अनेक नाती. खरंच जबरदस्त संघर्ष पाहायला मिळाला. कौतुक अंबरनाथ रायझिंग क्रिकेट क्लबचं केलं पाहिजे. शेवटपर्यंत त्यांनी हा सामना सोडला नाही. संघर्ष चालू ठेवला. संघर्ष हे जीवनाचं नाव आणि संघर्ष हे क्रिकेटचंही नाव आहे. सामना रंगतदार. 12 चेंडू 45 धावा. 22.50 ची सरासरीने आता हे 12 चेंडूचा खेळ झाला पाहिजे. बॅट चेंज करण्यात येते. लॉंग हँडल नक्कीच वापरण्यात येईल. बघूया मॅचची समाप्ती कशी होते. दरम्यान हा चेंडू यावेळी जमीन लगत खेळतोय. डीप मिड विकेट काऊ कॉर्नरला 1 धाव मिळते. देखते हैं मैच की अभी एक कहानी 11 गेंदों की. आइए सुनते हैं हमारे इंग्लिश कमेंटेटर साथी कमेंटेटर आनंद शेष की जुबानी. Thank you, sir. 44 required of 11. This is nicely paid down the ground. It is racing towards the fence. Absolute cracker of a shot. 184 on the board.
38 required of 10 deliveries. If you ask me whether it's possible, yes, definitely it's possible. And this partnership has been really, really good. Mayur Divekar, 47 of 19. Brilliant he has been from the onset. Saksham Jha giving a good hand, good partnership, 17 of 11. 10 deliveries, 38 runs to get. Tension, pressure, mountain. Vikas Pandey, 3.2 overs in the game. 1 for 31. Still 4 wickets in hand. As I've told you earlier, 10 deliveries and 38. This will go down the wire. Definitely game-changing over. This time wanted to heave it once again down to the long on region. They're settling in for just a single. 37 of 9. The penultimate over. 3 crucial deliveries. On strike Saksham. Need to hit big. This time takes the outside edge. Goes down to the third man region. A good catch. Very good catch this by Naveen Sharma, the birthday boy. Took the outside edge, flown down to him, down to the short third man region. Brilliant catch that. Seventh wicket down. Had there been a couple of runs on that previous delivery, it would have been Mayur Divekar on strike. Would have been really good for the batting side. Not to be. Back in the dugout, Saksham Jha, after playing a fine hand. Up comes the new batsman. Nitesh Rai. Just 8 deliveries remained. 37 to get. Is there still a twist left in this match? What a seesaw battle we have. First batting along, FTL. Sairaj Patil started well, going all guns blazing. Then a little halt in the inning. Then once again, all guns blazing. Those partnership between Yatin Madhvi. Nicely bowled. Nicely played down to the cow corner. Just a single. On strike once again, Mayur Divekar, 48 of just 20 deliveries. 36 to get of 7 deliveries. Will he go for the big one? Or will just take the strike in the next over? Short of length delivery, pulled nicely down to the cow corner region. Just a single. 35 to win of 6 deliveries. Going down the wire, this second semi-final of this edition. Upu Mukhyamantri Chashak, Thane Premier League Season 13. Definitely the first 2 deliveries will decide the fate of this match. 35 to win of 6 deliveries. Coming on to bowl the final over of this encounter. Coming on to bowl Rishikesh Jadhav. Arun Yadav, that was a full toss, played straight to the bowler, good fielding, though by the bowler. Arun Yadav himself on the stride, brilliant stop, 35 of 5. Quite improbable now, unless they bowl any extra stuffs. Full toss this time, hit nicely. Not a sweet connection and a good tumbling effort from Yatin Madhvi.
Good catch this. Good effort from Mayur Divekar holding one up end. Taking it down the wire this match. Brilliant, brilliant effort from him. Just fell short by a run. 49 of just 23 deliveries. 3 boundaries and 4 sixes in that. Brilliant, brilliant. This inning has been from Mayur Divekar. Taking down the wire. 49 of 23. New batsman coming in. Good delivery this. Just a low full toss. Takes it on the full. Played down to the mid-wicket region. Just a single. .34 required of 3 deliveries, almost clear. Who is the second team to enter the finale of this edition? Nitesh Rai on strike, 188 for 8. Good delivery, just leaving the batsman. Signal from the umpire, a leg by. 189 on the board. 2 deliveries to go. 189 for 8. Nicely bowled, angling in, wrapped on the bats. Up go the fingers. 9th wicket down. Isn't going to hurt because impeccable now. The target, improbable, unchaseable. Just one last delivery left in this crucial encounter, second semi-final, and 33 runs to get. Ambernath Rising Cricket Club. They were brilliant. Mayur Divekar particularly taking the match down the wire, taking it deep. 49 of just 24 deliveries. What a brilliant inning it was. Last man in for the batting side. Last ball. Hello. That's a nice stroke, but not converted in a win. And congratulations, Team FTL. The second team reached in the final of edition number 13, Thane Premier League 2025. Congratulations, Abhinandan, Team FTL, and well played, Ambernath Rising Cricket Club. Congratulations, winning team. I request both the team, please gather in front of presentation arena for the presentation of player of the match, star of the match. Please fast, guys. I request both the team, please gather in front of the presentation arena for presentation of star of match, player of the match. Both the team, Team FTL, Team Ambernath Rising Cricket Club, be hurry, guys. Please be fast. Team Ambernath Rising Cricket Club and Team FTL. This is the time for the presentation of star of the match. Both the team, please. Guys, please come in front of the presentation arena. The time for the presentation of player of the match of this crucial semi-final number 2.
Ambernath Rising Cricket Club, guys, please come here. प्लीज जरा टीम अमरनाथ रायझिंग क्रिकेट आपल्याला विनंती आहे, आपण जरा त्वरित प्रेझेंटेशन कक्षासमोर यावं. प्लीज गाईज प्लीज. मी विनंती करीन सन्माननीय विनायक गावंड साहेब आणि सन्माननीय संकेत नानकर साहेब यांना की आपण कृपया आम्हाला प्रेझेंटेशन कक्षामध्ये जॉईंट व्हावं. प्रेझेंट कक्षामध्ये आपण पाहतोय सन्माननीय विनायकजी गावंड साहेब, संकेतजी नानकर साहेब यांना. आता आपण वळूया प्रेझेंटेशन साठी. पण एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. पुट हँड टुगेदर फॉर द बोथ द टीम. व्हॉट अ परफॉर्मन्स गिवन बाय द बोथ द टीम. दॅट इज अ परफेक्ट मॅच. व्हॉट अ परफॉर्मन्स, व्हॉट अ क्रिकेट शो. आणि या सामन्याचा स्टार ऑफ द मॅच पुरस्कार देताना ज्याचं आम्हाला वारंवार अभिनंदन करावंसं वाटतं, 51 चेंडूत 71 धावा, 8 चौकार आणि 2 षटकार यांनी सजवलेली खेळी तो ठरतोय अभिनंदन हार्दिक तामोरे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हार्दिक तामोरे याला या उपांत्य फेरीच्या दुसऱ्या सामन्याचा स्टार ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे. विनायकजी गावंड साहेब आणि संकेतजी नानकर साहेब यांचे शुभ हस्ते. कॉंग्रॅच्युलेशन हार्दिक. हार्दिकचं हार्दिक अभिनंदन. संध्याकाळी शार्प 6 वाजता रिपोर्टिंग, 5:45 रिपोर्टिंग, 6:30 वाजता शार्प नॅशनल अँथम, 7:15 टॉस, 7 वाजता मॅच स्टार्ट. नो डिले विल बी एंटरटेनमेंट. एक विशेष सूचना टीम FTL ला, जो संघ विजयी ठरलाय, एक लक्षात ठेवा, उद्या बरोबर ठीक 6 वाजता रिपोर्टिंग टाइम आहे. त्याच्यानंतर आपण नॅशनल अँथम घेणार आहोत 6:30 वाजता आणि 6:45 वाजता टॉस होईल आणि 7 वाजता बरोबर पहिला चेंडू पडेल. या माहितीसह आपलं हार्दिक अभिनंदन टीम FTL. पुन्हा एकदा अमरनाथ रायझिंगसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत, कारण शेवटी त्यांनी जो संघर्ष केला त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. विनिंग टीम कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन. भेटूया उद्या संध्याकाळी 6 वाजता. अशाच एका मोठ्या क्षणी अंतिम सामना सुरू होईल.